Channel is open, students. Students, the channel is open. Mumbai ground, Victor Tango November Kilo Charlie, pre-flight radio check, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Victor Tango November Kilo Charlie. Mumbai ground. Radio 5. How do you read? Read U5, strength 5, Victor Tango November Kilo Charlie. Victor Tango November Kilo Charlie. Mumbai ground. Report position. Mumbai ground, Victor Tango November Kilo Charlie, 0111 IFR Mumbai to Nagpur, radial 073 50 DME, outbound Mumbai, Golf 450, flight level 300, over Opaka, estimating Aurangabad 0125, Dubox 0145, ETA Nagpur 0205. Roger. Mumbai ground. Nukul, send me a picture of the call that you have written. Send me the call Affirm, sir. log. Affirm, sir. Okay, students. So simulating a blind experience really expands your understanding of RT. Okay, 1 second. Intent is to make you understand. Okay. Sorry, I don't have proper lighting today. The intent is to make you understand that you are a part of a live operational situation on an aerodrome. The moment the session is on and you are told that the instructor is here, it means you are the pilot. I am the ATC. You are ready to dispatch your aircraft. You start with your calls. You don't just sit idle. Yesterday, I said the same thing. When the class starts, you have to do a few calls amongst each other and some readability check. I'm not going to allow if you just come in the class and even sit for 2 minutes idle. Follow this, please. This is very, very, very important. The first thing, especially when we're simulating final preps or doing mocks. Okay, why do you not do these simple things? Please explain. I want you all to tell me इतनी छोटी सी चीज आप क्यों नहीं कर रहे हो? 10 बजे से आप बैठे हो, 10:30 बजे सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार बोलना क्यों पड़ रहा है? चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? नुकुल को भी याद क्यों दिलाना पड़ रहा है that he has to do a call? How many times should I say that? Think about it, students. Why do you not do it? Short-term memory loss? Or you just take it for granted? Or you just want to sit there and want someone to talk? You don't want to do the hard work of making calls and practicing calls?
What is the requirement of doing that call? To understand if our connectivity is good, if you can hear me well on Zoom. So we are striking two birds with one stone. We get to practice calls. We get to check whether you can hear me well or not. We get to establish a good connection over the internet so that I can start with whatever I'm saying and you can just ensure you don't miss out due to bad connectivity. Still, if you don't do it, you will waste 10-15 minutes again of the starting of the session. We cannot afford to do that for final prep sessions. छोटी छोटी चीज आप सही नहीं करते हो ना, so the whole plan can be. So I want to hear a few calls, maybe amongst each other. Now ATC is off the air, so you all talk to each other, taking either your own call signs or just say that, okay, Tanmay, you are ATC and I'm calling you, and then take that call sign. Tanmay will act as the call sign. I'm putting the speaker, I'm putting it on speaker so I can hear it. And then whoever is taking calls will quickly send me a log. Do it in 5 minutes, as many as you can. I'm setting a timer. After that, I'll be sharing the question paper with you all. Before I share the question paper with you all, I will be giving you a couple of instructions that you need to follow for part one, so that that can help in the mock for the student giving the mock as well as everyone else. 25 minutes, and then part two Viva. Part two Viva will not be asked in depth, just to see how it feels. Remember the drill. But before that, I want to hear a few calls. Students, I want you all to properly rename yourselves on Zoom. Somebody using a mobile phone, please rename yourself. Okay? And do a few calls. Only then I'm going to start. Let me see that maturity. Let me see that proficiency between you all as students. I'm listening to every call right now. Victor Tango, Kilo Alpha Romeo. Victor Tango, Mike Sierra Lima. Victor Tango, November, Kilo Charlie. Victor Tango, Mike Sierra Lima. क्या हो रहा है? Victor Tango. नहीं, क्या हो रहा है? करिश्मा, are you not there? Yes, sir, I am there. So, Muskan took your call sign. She raised your station. Sir, C race November Kilo Charlie. I am Kilo Alpha Romeo. Before that, she raised Kilo Alpha Romeo. There was no response. So she called November Kilo Charlie. Okay, sir. So Muskan, pilot was not aware. Muskan, remember this. Everybody remember this. When you're raising a station, 5 to 10 seconds is the time you will wait for a response. But by the time 10 seconds are over, 10 seconds in RT, you will raise that station again. So Muskan, Karishma might be busy with something as a pilot, working on a few things, might not have heard the call, might have just gone out in the cabin to talk to the crew, cabin crew. Okay. So as a rule, if you raise a station, if you don't get a response, you call that station again. Note it, everyone. This is learning number one for final prep. These little basic things are what is going to help you either clear or not clear. So if you raise a station and if they don't respond within 5 to 10 seconds, you raise that station again once more. So by the time Karishma was aware, she could hear November Kilo Charlie. So in that place, Muskan, if you would have called Karishma again, she would have given you a go ahead and our mission to communicate would have been successful following this one basic strategy that when you raise a station, if you don't get a response within 10 seconds, you raise that station once more again, following the same process, wait for 5 to 10 seconds. And then if she doesn't respond, then you go to the next authority.
This is how you figure out which ATC to talk to, or this is how you figure out what to do in an RCF situation where your ATC doesn't respond. This is also like an RCF that Karishma is not responding. Probably there is a radio communication failure. Probably. So what do we do in that case? We try to raise that station again. If it doesn't work, then we call the next station by just raising the station. प्लीज बी केयरफुल. ये एक एक चीज करनी है, हमें सीखनी है, हमें इसके बिना आप पास नहीं होगे. So please make a note of it. Carry on with the exercise and everybody on alert. And do not wait for more than 10 seconds. It sounds very awkward and it sounds very unprofessional. These little things will keep you away from your results. Remember that. Carry on with the exercise. Continue. And please be alert. Nukul, आपने भी बहुत लेट रिस्पॉन्स दिया था. उतना टाइम नहीं देना है रिस्पॉन्स में. Be alert, students. Carry on, please. I'm listening to everything. Victor Tango, Kilo Alpha Romeo, Victor Tango, Mike Sierra Lima. Victor Tango, Mike Sierra Lima, Victor Tango, Kilo Alpha Romeo. Go ahead. Victor Tango, Kilo Alpha Romeo. I'm assigning you as Mumbai Radio. Victor Tango, Mike Sierra Lima. Mumbai Radio, Victor Tango, Mike Sierra Lima. Stand 2, pre-flight, cell call, check on secondary 88908, check cell call Alpha Bravo Charlie Delta. Sir, actually, I don't know what to do Right. now. I haven't studied this much yet. Sir, Victor Tango, November Kilo Charlie. Victor Tango, Mike Sierra Lima. What's happening and why is just Muskan bothered about giving calls? यार आप लोग को प्रैक्टिस नहीं समझ आ रही है ना, मैं आप लोग के लिए करवाऊंगा नहीं फिर, ठीक है? And I'll make your video thing compulsory from now on if you don't cooperate. What's happening? क्यों बुला रहे थे बोलो? What happened? sir, actually, I haven't studied this much yet. तो मुझे नहीं पता था इसके आगे करना क्या है. अरे just give calls ना Garishma, just practice. Handle it some or the other way with whatever you know. Just do it and get done with it. Or you can just say negative standby so that the other person can talk to someone else. Use whatever you know and communicate naturally. That's it. All you have to do is just do some practice, students. You don't have to worry about right and wrong. I haven't studied, I've studied. It's fine. This much RT everybody knows by now. And if you don't know, students, then you need to get on to it parallelly with your other subjects. But yes, so communicate, Karishma, with however you know. If you don't know much of RT, you can still use little bit of RT, little bit of English, and just communicate and say that, no, I'm not available. Please call me after 2 hours, 3 hours, or maybe after a few days. Anything. Just try to make it logical. That's what I want here. So like how you said, you could have just said that to that particular station. Victor Tango Mike Sierra Lima, Victor Tango Kilo Alpha Romeo, negative, Victor Tango Kilo Alpha Romeo, unavailable for communication or operations. Simple. Okay, sir. Right? This is what I want from y'all. Communicate what do we have to communicate through RT, in RT, but practice that and write. Whatever you say, you write it. You push yourself, no matter where you stand. And बाकी लोग का क्या चल रहा है यार? Where is Prerit, Gulshan, Chavi, Ayush, Om?
Rani, Tanmay, Rohita, Sridhar. Kajal, you're joining in for the first time live. Please take a feel. It will help you in future. You might not understand everything. Gurpreet, finally happy to see you live. करना है बट करोगे नहीं तो होगा नहीं गुरप्रीत. Yes, sir. गायब हो कितने दिन से और इतने दिन क्या कर रहे थे? Sir, I'm studying RT and इतने दिन क्या कर रहे थे? अचानक से 10 तारीख को एग्जाम है और सर ये बचा है वो बचा है वो सब बचा है. इतना टाइम पड़ा था 2 महीने तब क्या कर रहे थे? और फिर लाइव लेक्चर भी अटेंड नहीं कर रहे थे. सर मैं ना किसी Okay, you don't have to say. You don't have to say. This is how the world is gonna ask you things. गलती आपकी हो या ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है हमेशा. I am very upset, okay? You're not practicing, you're wasting 20 minutes. क्या है ये सुबह सुबह चिल्लाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? क्या चल रहा है? क्यों बैठे हैं सब लोग ऐसे दुखी एकदम? There's no activity, no action, only 1 or 2 students are bothered to give me calls in practice. Then why are others joining? Go sleep it off. समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या बोला है. जो बोला है वो करना है. चुपचाप बैठे रहोगे फिर नाम ले लेके चिल्ला चिल्ला के बुलवाना पड़ेगा. हाँ, तो एग्जाम में भी वही होगा क्या? तुम लोग को क्या चाहिए? चुपचाप आओ, लेक्चर देके चले जाओ. ऐसे आरटी का ट्रेनिंग नहीं होता. कितने बार समझाना पड़ेगा? तो हमारा हुआ नहीं है, हुआ है, ये नहीं वो नहीं. बात करोगे तो समझ में आएगा ना. चुपचाप बैठेंगे तो कैसे समझेगा? मुस्कान, you will not give a call now. Affirm, Victor Tango Mike Sierra Lima. All stations, Victor Tango, Oscar Mike Golf, simulating Mumbai ground, contact ground 121 decimal 9. Very good attempt. Contact which ground 121 decimal liner. कोई पूछो वापस फटाफट. ऑल स्टेशन को कॉल गया है, रिप्लाई नहीं आ रहा है फटाफट. विक्टर टैंगो एक ऑस्कर. सेकंड भाई साहब, एक सेकंड. कोई एक आदमी बोलता है तो दूसरा बीच में नहीं बोल सकता है. नंबर रूल नंबर 2 इन अनरियल आरटी एनवायरमेंट. ओनली 1 person कैन ट्रांसमिट. अदर्स विल नॉट प्रेस द पीटीटी, नॉट क्रिएट इंटरफेरेंस. नेवर माइंड. ओम, इतना फास्ट बोलोगे लिखेगा कौन? भूल गए सब कुछ? इतना अच्छा कॉल ले रहे हो, ट्राई ले रहे हो, एफर्ट ले रहे हो, बट इतना फास्ट बिना लिखे तो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की. क्या है फोकस क्या है आप लोग का? इतने लेक्चर अटेंड करके बैठे हो, आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो फिर? All stations, Victor Tango, Oscar Mike Golf, simulating Mumbai ground, contact Mumbai ground on 121 decimal 9. Victor Tango, Oscar Mike Golf, Victor Tango, Romeo Tango Alpha, contact correction, simulating on radio frequency 121 decimal liner. Roger. Victor Tango, Oscar Mike Golf. Victor Tango, Oscar Mike Golf, Victor Tango, Alpha Yankee Uniform, Mumbai ground on 121 decimal 9er, pre-flight radio check 1
2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? You at Mumbai ground. Read you 5. Primary 8081. Secondary 8811. Victor Tango Alpha Yankee Uniform. Primary 8081. Secondary 8811. Mumbai ground. Mumbai ground. Victor Tango Alpha Yankee Uniform. On secondary 8G correction 888 The big 11 pre-flight cell call check cell call correction check cell call Alpha Bravo Charlie Delta. Checking cell call Alpha Bravo Charlie Delta. Mumbai ground. Cell call okay. Changing to primary 8081 Victor Tango Alpha Yankee Uniform. Roger. Mumbai ground. Mumbai approach. Victor Tango Romeo Alpha November on 121.9. Position 25 DME outbound Mumbai. Flight level 70. Golf 450. Request climb flight level 120. Victor Tango Romeo Alpha November. Victor Tango Sierra Kilo Yankee. Please assign Mumbai approach. Mumbai approach. Assigning Sierra Kilo Victor Tango Sierra Kilo Yankee as a Mumbai approach. Mumbai approach. Victor Tango Romeo Alpha November on 121.9. Position 25 DME outbound. Flight level 70. Golf
450. Request climb flight level 120. Victor Tango Romeo Alpha November. Cleared for climb flight level 120. Clear for flight level 120. Leaving flight level 70 for flight level 120. Victor Tango Romeo Alpha November. Roger. Mumbai approach. Okay, not bad. Very good. Students, everyone who's done calls, send me a picture of your logs. So how was the experience? Students who've done this simulation right now? Rohita, Karishma, Rani, Muskan, Om, Tanmay, Nukul, So very Gulshan. experiencing, sir. Sorry? So it was very experiencing. Very enriching in experience. Yeah. Yes. Talk to me, students. सब लोग अनम्यूट पे हो जाओ, सब लोग एक साथ बात करो. Was first time, sir, so I was somewhat I did some words either, It I did was not your do first properly. time, Yeah. but it was very good. You made one fumble, and when we fix that fumble, you will sound like a professional. Do you realize how good you sound with even just with your first call? That was good, Rohita. Thank you, sir. Talk to me, students. Unmute. Everybody be on unmute right now. Sir, it was a good experience. श्रीधर का कनेक्टिविटी इशू है. करिश्मा, आपका भी पहला कॉल अच्छा था. वेरी वेल डन द वे यू रिस्पॉन्डेड एंड ऑल. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट पुश योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो थिंग्स. आपको खुद को नहीं पता है, बट आपके दिमाग में फीड करी गई है चीजें, जो आप अगर कॉन्फिडेंस रखोगे अपने आप बाहर आएगी. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव योरसेल्फ. सबके लिए बोल रहा हूँ. इट वाज गुड करिश्मा. द वे यू सेड इट वाज गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोल रहा हूँ सब लोग अनम्यूट पे रहो ना, बात करो सब लोग. हैव अ गुड डिस्कशन. जस्ट गोना स्टार्ट. आई जस्ट हैव टू प्रेस वन की टू सेंड यू द क्वेश्चन पेपर. So it was a very good experience. The all calls are done by students are very good, but there are a little bit mistake. While climbing, we need to add top of climb. It's necessary and estimates also. वो तो ठीक है. Otherwise is very good call. Rate of speech is good. तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? No sir. तबीयत ठीक नहीं है? No sir, बढ़िया है. तो एनर्जी चाहिए. कितने बार कॉल में एनर्जी. वी नीड दैट एनर्जी इन आवर कॉल्स. पायलट कौन सा पायलट, कौन इस जबरदस्ती लाएगा इसको? आई थिंक फर्स्ट पायलट हुज लाइक मेरा मन नहीं आज प्लेन उड़ाने का. मन नहीं है तो किसी और बैच चला जाता हूँ. एनर्जी. निकुल, ये एनर्जी चाहिए. आयुष, तुम्हारा कॉल में कनेक्टिविटी इशू थी. ब्रेक हो के पूरा कॉल जा रहा था. सही नहीं है वो एग्जाम्स के लिए. वी नीड टू पॉलिश दैट. तुम्हें सब आता है, फ्लुएंसी डेवलप करनी है, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस समझ में आना चाहिए. जिस हिसाब से अभी लिया है उसी हिसाब से लोगे. सही कॉल भी दोगे ना, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा. उसको लगेगा थोड़ा ब्रोकन और बहुत स्लो कॉल है. तो मुझे आपके कॉल में भी एनर्जी चाहिए. नुकुल, आपके कॉल में भी एनर्जी चाहिए. बाकी सबके कॉल में समझ आ रहा है बहुत अच्छे से. आप दोनों को उस पर काम करना है. बस छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको इंडिविजुअली बता रहा हूँ. गुलशन, तुम तो चुप ही हो गए. मैं बोला 1 सेकंड बीच में मत बोलो, उसके बाद आपका आवाज ही नहीं आई. ऐसे ईगो लेके नहीं चलते एविएशन में. आपको डिले दे दिया तो आप तो ठोक दोगे प्लेन यहाँ वहां गुस्से में. फिर ऐसे थोड़ी होता है. No, sir, I was able to write all the calls. Rate of speech was very good. Or yeah, I'm very happy with all of your rate of speech also, students, whoever has practiced. Nukul and Ayush playing it too safe. रानी, आप भी अच्छा बोल रहे हो, बट आप भी यहाँ वहां थोड़ा फंबल कर रहे हो. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी हिंट आ रही है. उस पर हमें काम करना है वहां पे. नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा अरे बच्चे को आता नहीं है, छोड़ो, थोड़ा और मेहनत करके आएगी, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे. दिस इज हाउ दे जज अस, यू नो.
We don't want to give them that chance. हमें सब आता है, एक दो मिस्टेक कर दी तो क्या हो गया? We are ready. This is what they, if they sense, they'll be like, yeah, she's ready. Let's put her to part 2 and let's see her technical knowledge also, personal interview skills also. Affirm, sir. It was good, but slight hesitation, slight fumble is what we need to work upon. Couple of calls, I think you'll be good to go. But be confident there. सर में नहीं है वो चीज, नहीं मैं पुश कर रही हूँ, मैं मेरा बेस्ट दे रही हूँ. Always, I am giving my best. Don't judge yourself. No, no, मेरा best नहीं है. That, although that modesty is good, that will not help us in our careers. You need blind confidence most of the times when you are preparing. अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस मत रखो. दैट इज इलॉजिकल. समझ रहे हो ना? दैट इज सिली. बट आप पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख सकते हो? करेक्ट. Affirm, sir. फॉर एवरीवन. नुकुल, आयुष, प्रेरित, आपके कॉल्स, आपको क्या लगता है वीडियो ऑन रखोगे, स्माइल करोगे तो सर आपको परेशान नहीं करेंगे? प्रेरित बोला सर थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है, मैं करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो. ठीक है, डोंट वरी. समझ रहा हूँ मैं, डोंट वरी. दिस इज हाउ फेस रीडिंग हेल्प्स इन लाइव क्लास. क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इजीली समझ आता है ना, तो आपको टाइप नहीं करना है, आपको बोलना कुछ नहीं है, सब समझ आ जाता है. टीचर को सब समझ आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कौन कंफ्यूज है, कौन नहीं है, किसको क्या बोलना है ना? गुड. और क्या एनीबॉडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? आगे से करेंगे राइट? एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे को अलग अलग सिचुएशन देंगे और देखेंगे कि सिचुएशन का रिएक्शन कैसा आ रहा है. पुट ईच अदर टू टेस्ट इन सच सिचुएशंस. परेशान करो, देखो कि यार इसको मैं कैसे फेल कर सकता हूँ या कर सकती हो. ऐसा क्या सिचुएशन दो एज एन एटीसी. ओके, वेरी गुड. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी फाइनली यू आर डूइंग इट. बट क्या अभी बच्चे हो क्या, आधा घंटा मार मार के पढ़ने बैठाना पड़ रहा है? देखा छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, नर्सरी, जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो बहुत जिद्दी होते हैं. आधा एक घंटा मारना पड़ता है. पेरेंट्स देखा है मैंने, तब जाके बच्चा बोलता है ठीक है मैं 1 घंटा पढ़ूंगा ABCD. That is never a good thing to hit anyone, you know. Violence is never good. Sridhar, try something. मोबाइल डेटा पे शिफ्ट हो जाओ, हॉटस्पॉट पे शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज अभी मॉक है, बीच में फिर आपका डिस्कनेक्ट होगा तो आपको कुछ मतलब समझ नहीं आएगा. स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस. आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर as soon as I'm done giving the instructions. The moment you get it, Rani, you will be giving the test. I will tell you start transmitting. It will mean that your timer will start. जब आपको बोल रहे हैं ये स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, इसका मतलब ये नहीं आप तुरंत ट्रांसमिट कर दोगे. आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, आप फ्लाइट प्लान रीड करना, क्वेश्चन पेपर देखना, चार्ट पे ट्रैक कर लेना उसको, इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो पढ़ लेना, क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी देख लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 देख के क्वेश्चन नंबर 1 को दिमाग में फ्रेम करना है. दिमाग में फ्रेम करने के बाद आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग करनी है. दिमाग में फ्रेम करने से फायदा क्या होगा, अगर हमने आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ फर्स्ट कॉल, आउट ऑफ नर्वसनेस कोई सिली मिस्टेक की है इग्नोरेंस से, वो दिमाग में चेक हो जाती है एंड जब कॉल दोगे आप तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो. तो इनिशियल मिस्टेक्स आपकी कवर अप हो जाती है. इफ यू मेक द फर्स्ट कॉल इन द माइंड, क्रॉस चेक इट एंड देन गिव द कॉल. दिस कैन कॉस्ट यू, और यू कैन से दैट यहाँ पे आपके 2 से 3 मिनट तक जा सकते हैं. इट्स ओके. बाकी के 20-22 मिनट भी बहुत ज्यादा काफी है आपका पूरा पेपर खत्म करने के लिए. किसी को 1.5 मिनट लग सकती है, किसी को 1 मिनट, किसी को 30 सेकेंड्स. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लाइट प्लान एंड द क्वेश्चंस. कोई क्वेश्चंस इजी हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, सिंपल सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रॉस चेक द ATCs, क्रॉस चेक द कॉल साइन, क्रॉस चेक द फ्लाइट प्लान, क्रॉस चेक द अदर इंफॉर्मेशन, क्रॉस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी सब मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है. अदरवाइज इफ वी टेक सिंपल थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम कोई सिली मिस्टेक कर जाते हैं. एज इन कोई VIP फ्लाइट मिस कर दी, अदर इन्फॉर्मेशन रीड नहीं किया, टाइप ऑफ फ्लाइट मिस कर दी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कहीं मेंशन होगा अदर इन्फॉर्मेशन में, वो मिस कर दिया. फ्लाइट रूल्स यांकी ज़ुलू हो सकता है जिसकी वजह से हमारा फ्लाइट लेवल वेरी कर सकता है. मे बी वी डोंट हैव सर्टेन सिस्टम्स विद अस दैट माइट नॉट अनेबल अस टू हैव अ रेडियल व्यूअर और समथिंग.
केयरफुल रहना है वो सब चीजों के लिए, सीधा कॉल पे जंप नहीं करना है। अगर यहाँ की चीजें मिस हो गई और कॉल पे जंप कर रहे हैं, देन कॉल तो दे दोगे बट आप में कुछ ऐसा एरर होगा दैट यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, और यू आर नॉट टॉकिंग टू द राइट एटीसी, और यू आर नॉट टेकिंग द राइट कॉल साइन। दैट इज द मेजर ब्लंडर अ स्टूडेंट कैन डू, जिस वजह से आप कितने भी अच्छे कॉल्स दो, आपको मार्क्स ही नहीं दे पाएंगे। To avoid that blunder, the first instruction, the first thing when you start this is very important. But I don't know, some oversmart students, they think that sir बोल रहे हैं वो नहीं follow करूंगा तो भी चल जाएगा, and they don't do that. You do it and you will see the benefits. I have seen some students say that sir वो strategy मेरे काम नहीं आई, क्योंकि मैंने जब दूसरा क्वेश्चन देखा तो दूसरा क्वेश्चन देख के मैं डर गया, उसकी वजह से मेरा पहला क्वेश्चन भी खराब हो गया। So if you go to the next question, if you check the further questions, if you don't know the answers, don't get scared. Be prepared. Okay, that is the continuity, and I'll have to frame my own call. Focus on intent. Intent will be something to do with safety. Rest, follow the structure. एंड जो आता है फिर, चलो फर्स्ट सेकंड आ रहा है, थर्ड फोर्थ आपने देख लिया, आप पैनिक हो गया, आपको पता नहीं क्या करना है, फर्स्ट टू पे तो 20 ले आओ ना आप। इसलिए वो आपका फायदा हो जाता है कि चलो मेरे ये 2 कॉल है, ये मुझे परफेक्ट करने हैं, तो जो फर्स्ट 2 कॉल होंगे उस पर आराम से 15 मिनट लेके वो 2 कॉल करोगे, 40 आ गया ना, बाकी 2 क्वेश्चंस आते नहीं है ना, तो भी 10 तो मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे। तो 50-60 आउट ऑफ 80-60 आ गया, पास हो गए। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तो वैसे ही स्कोरिंग होगा आपके लिए। तो फिर भी अगर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप स्कोर चेक करोगे तो आराम से 70 आप स्कोर कर सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो करो फिर। करेक्ट। 25 मिनट का सिचुएशन है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल देयर इज। ओके, in those 25 minutes you have to be your best. Before that, after that, you be the way you want to be scared, be nervous, be underconfident. Those 25 minutes you have to be as a PIC who is super confident, and people are happy to fly behind that PIC, that yeah, I trust you, you're going to take off and land me safe. That confidence. Any questions, Rani or anyone else, before we start with the first mock? No, sir. Negative. Negative bola, but you didn't end with your call sign. Negative Victor Tango. Thank you. Students who are not giving the mock, like of course one student will give the mock. आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना है? सिर्फ बैठे नहीं रहना है, ठीक है ना? You'll have to write everything that is happening, increase your writing skills. Wherever you find flaws, correct them, make your markings, make your own calls, compare, study, involve. Think about what would happen if you would be in that situation. Afterwards, we will have a short discussion also. समझ आ गया सबको? ठीक है, दोबारा से फालतू में आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है जहां पे मुझे सेम चीजें वापस बोलनी पड़े। आर यू श्योर? जो भी पूछना है अभी पूछ लो आप लोग, आराम से, ठीक है, टाइम कोई रश नहीं कर रहा। 25 मिनट यूं निकल जाते हैं, 10 मिनट पार्ट 2 आएगा, बाकी टाइम तो हम ये बातचीत में ही ज्यादा जाता है हमारा। If I have to give you realistic mocks, then 30-35 minutes are enough for one student. Why are we taking 2 hours? उससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। वो 2 घंटे में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको फिर इशू फिर हमारा एटीट्यूड में है, थोड़ा सा उस पर काम करना है बस। So we have a solution for everything. You just have to work on those things. And when you are unable to work, you talk to me about it. So the examination will be a blind experience. So I will also go off. Student appearing the mock will assume that I am seated behind them and they are seated ahead of me with their back face to me. So मैं ऐसे हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो पीछे बैठे हैं आप एग्जामिनर, और अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो आप आगे बैठे हैं। हम दोनों हेडसेट से कनेक्टेड होंगे। दे विल गिव अस वायर्ड हेडसेट्स, दे विल नॉट गिव अस वायरलेस हेडसेट्स, एंड दे विल नॉट गिव अस पीटीटी, दे विल गिव अस सिंपल लाइव, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बिना किसी पीटीटी के दबाए वैसे।
But then you'll get an answer sheet. You'll go take your stationery, scale, pen, pencil, and then just start writing. Okay? Don't be nervous. Think and speak. And although try to give your best in the mock, but in case you don't score well, instead of getting disappointed, you think that, okay, it's good. These are my areas that I have to improve. Let's improve. That's it. आज एग्जाम नहीं है, आज आपको 20 आए कि 80 आए कि 100 आए. It has to be productive to increase your level of expertise. That's it. Okay. किसी को 15-20 भी आ रहे हैं, I don't mind as long as it's gonna help us score better. So keep that in mind. This is not your exam. This is practice. This is not a mock exam. This is mock practice. रानी तुम्हारी मॉक प्रैक्टिस जितनी लगेगी उतनी करेंगे, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होगा तब हम बोलेंगे चलो तुम्हारे एक मॉक एग्जाम भी ले लेते हैं, अगर टाइम मिला और तुम्हारा मन हुआ देने का तो वहां पे एकदम सीरियसली आप ले सकते हो. बट यहाँ भी सीरियसली लेना है, बट अंडरस्टैंड मिस्टेक्स हो सकती है. ठीक है. आई डोंट थिंक देयर एनी मोर इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट. कीप अ लुकआउट ऑन द ईमेल and student appearing the mock. The moment 25 minutes are over, when we will tell you that okay, wait in the waiting room, तुरंत आपको अपना लॉग के पिक्चर्स क्लिक करके तुरंत JPEG टू PDF करके सेम ईमेल जिससे आपको मिला है अभी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो सेम ईमेल पे रिप्लाई करना है. लॉग्स रिप्लाई, डोंट सेंड मी अ न्यू ईमेल, रिप्लाई इन द लॉग so that the question and answer are recorded in our email history. It will be very useful. सिर्फ रिप्लाई करके अटैच कर देना आपको. Other students, if I ask only then you will send, otherwise you will not send. रानी, follow the instructions. सबको दे रहा हूँ instructions. एक बार बाकी मॉक हम तुरंत तुरंत करेंगे. अपने आप सेम इंस्ट्रक्शंस. प्लीज डोंट मेक मी रिपीट द सेम इंस्ट्रक्शंस एवरी डे, अदरवाइज एक एक मॉक का टाइम हमारा निकल जाएगा. 25-25 मिनट निकल जा रहे हैं ऐसे ही. समझ रहे हो आप लोग? ठीक है. अभी प्लीज ये बच्चों की तरह यही वो बार बार मत बुलवाना है ये सब चीजें. ठीक है. It's a final prep class. Couple of students who have not had much lectures, you can just enjoy the session, observe, but observe and be involved completely. And parallelly, please take instructions from me how to go about RT and continue RT also. Now, आप लोग भी जल्दी practice करके ready हो जाओ. बस एग्जाम देनी है नहीं देनी हो देखेंगे हम लोग. चलो ठीक है. Blind होगा, but I am here only. Okay. चलो. So assume that you are in the waiting room, everyone, and other students are giving the exam. And the moment I say check your email, it means aa jao exam room mein part 1 ke liye. Okay. And when I say your timer starts, means question paper mil gaya hai, start transmitting, means your timer starts. Everybody will be blind. Gulshan, aap bhi blind rahoge. theek hai, sab log blind rahenge. Rani, all the best, be confident, and नो क्रॉस टॉकिंग इन बिटवीन, ओनली RT. जो भी होगा पेपर के बाद ही डिस्कस करेंगे हम लोग. एंड हो सकता है कि पार्ट 1 के फीडबैक के पहले ही आपको पार्ट 2 का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा जाए. आता है नहीं आता है, रिमेंबर द स्ट्रेटजीज हाउ टू कवर अप एंड ट्राई टू स्पीक. एंड यस, दैट्स इट. So you all are in the waiting room now, nervous and excited both at the same time. Also on this question paper, attached with the question paper is a chart, a little older chart compared to the new chart. We also have a little more advanced version of charts that have been coming in the exams. I'll show you all the difference in probably in the next to next session when I'm doing a final walkthrough from my side for part 1 strategies. But you can still use this chart also that is there connected, or the charts that you have. I'll suggest you use the charts that you have. Okay.
And apart from Rani, everybody else will be on mute. Rani, you will be on unmute all the time when you're giving the paper mock. Thumbs up. Victor Tango Romeo Alpha November. Okay, students, come, your turn. So now you're all walking in the exam room. Rani, you have been called. Now it's your chance. Along with you will be 7, 8, or 6 students sitting together doing the same question paper. Everyone will have their individual examiner. Check your email, everyone. Whoever has not got it, you'll tell me on WhatsApp. Rani, once you receive the email, tell me, and then I'll tell you to start transmit. You will not be able to keep your timers, but I will keep the timer for y'all. Do you get the question paper? Negative, sir. Refresh. Check spam, check promotions, check updates. Do you get it? No, negative, sir. Check Yeah, again. yeah, get it. Very good. Everybody has been sent it. Please download it. Make a folder of these papers in your phone. यहाँ वहाँ मत रखो, बाद में मिलेगा नहीं. If you cannot find these things on your chart, then you can use the chart attached to this question paper also. So you can start transmitting. So call sign is not mentioned. Use Air India 129er. Generally, in this situation, you are supposed to use your own call sign, students. Victor Tango Romeo Alpha November. So you can go with your own call sign also. Go with your own call sign, Victor Tango Romeo Alpha November. Transmitting question 1. Chennai ground. Victor Tango Romeo Alpha November on 121.9. Stand 5. Security check cleared. Passenger on board 120 would like to carry out high power run up before setting course. Correction. Before startup, request startup. Victor Tango Romeo Alpha November. Chennai ground. Startup for high power run up. Not approved.
Startup. Correction. High power run up. Startup not approved. Request. Departure. Request correction. Request taxiway Charlie. Victor Tango, Romeo Alpha November. Chennai ground. Say again all. Startup for high power run up not approved. Station calling Chennai ground. Say again call sign. I say again Victor Tango Romeo Alpha November. Victor Tango, Romeo Alpha November. Chennai ground. Say again all. I say again startup for high power run up not approved. Victor Tango Romeo Alpha November. Victor Tango, Romeo Alpha November. Chennai ground. Report intention. Go to next question. Chennai ground. Victor Tango Romeo Alpha November. Stand 5 during engine run port engine on fire, switching off engine, request
startup, and taxiway Charlie. Disregard. Chennai ground, Victor Tango Romeo Alpha November. Stand 5 during engine run-up. Port engine on fire. Switching off engine. Request instruction. Go to next question. Student, please check your departure aerodrome. Make sure you're calling the right ATCs. And students, you can use the chart for reference, which is assigned as a second page to the question paper. So that, you know, koi mismatch na ho. Kolkata control, Victor Tango Romeo Alpha November on 132.45 over Kakid. Zero 430 weather deviation required. Flight level 330 Alpha 465 request reroute correction. Bad weather on Palco. Request reroute via Mike 770. Estimate Bubco 1440 Charlie 1450
request reroute clearance. Kolkata control Victor Tango Romeo Alpha November. How do you read? Bhubaneswar approach Victor Tango Romeo Alpha November. Kolkata control Victor Tango Romeo Alpha November. Transmitting blind due receiver failure. Position over Kakid. Bad weather over Falco will reroute Mike 770 flight level 330 will transmit again at Busbo. Bookbo. Go to next question. Please try to use the chart that is given to you with the question paper. Shall I transmit again, sir? Go to next question. It's question number 3 that you need to transfer. Two-thirds of your time is done. 1/3 of your time is left for your information. Visakhapatnam Tower Victor Tango Romeo Alpha November. Negative had negative contact with ATC. Position to 5 nautical mile outbound Visakhapatnam. Disregard Visakhapatnam Tower. Airprox safety, airprox risk of collision. Two zero nautical mile outbound
Vishakhapatnam, Victor Tango Romeo Alpha November, IMC Go to next question. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Port Blair Tower, Victor Tango Romeo Alpha November, 50 nautical mile inbound Port Blair, elevator stuck, unable RVSM, Papa 268, radial 259er, request descent flight level 270. Go to next question. Mayday, 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 Port Blair Tower, Victor Tango Romeo Alpha November, crashed crashed vicinity of Port Blair, position not recognized, request immediate search and rescue and medical service. Go to next question. Just transmit the answers as per RT. View. I don't understand the question. Just VORILS audio. how do you transmit VOR in RT? What is VOR? 3 code letter. No, how will you read this in RT? And also mention which question are you answering. Question number 5, alpha. Question number 5, bravo. Like that, one by one. What do you understand? These are abbreviations. How will you transmit it in RT? How to decipher or decode abbreviations? Do it quick. You only have 2 minutes left. VOR. एब्रीवेशन है, उसका फुल फॉर्म बताना है. Okay. VOR.
Question 5 alpha VHF omnidirectional range. Brow Go to next question. Wait for me. Go to next question. Next is question number 5. Bravo. ILS instrument landing system. Go to next question. Automatic direction finder. Go to next question. Location. You have to write the answers also, okay? Yes. And Question number 5. Delta. Quick, only 1 minute left. don't know the data. Say something. You cannot skip an answer. Location. I think locator. Go to next question. VHF. VHF direct. Yes. VHF omnidirectional range. Tango Alpha Charlie. Okay. Submit your question paper answer sheet as a reply to that email. Once done, let me know, and then wait in the waiting room for results and part 2 Viva. Here you don't have to go anywhere. You just sit there and do your thing. Others, you can take a breather if you want. The moment she sends me the answer sheet, I'll start with either the feedback or with the part 2 Viva. So please don't go anywhere. But yeah, you can just get up and sit down again, like 2-minute breather if you want. Because she'll take a couple of minutes to send me the answers. रानी एक बार सबमिट हो जाए तो बताना. कोई Yes. करेक्शंस नहीं करनी, कुछ नहीं करना. Students, for your part 2 Viva, I would recommend that you all keep your videos on, at least for that. Extreme privacy issue है तो मैं एक बार exception दे सकता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है तो please, ताकि interview I can see your body language and help you, and you can also feel one-to-one, because I'll also be video on. Only then the interview feeling will make sense. तो preparation नहीं है तो preparation करके रखना उस हिसाब से. Of course, you can wear masks and all. I don't mind. You can cover your face if you want. Just eyes can be open, but need to see your body language and everything. So that way you can be prepared, mock skiller. Yes, I have sent you. Okay. Wait in the waiting room for part 2 Viva and the result of part 1, of course. Waiting room मतलब यहाँ हो, जहाँ हो वहीं रहो. आप break नहीं ले सकते हो. Can have some water if you want. I'm sure water will be provided. Rani, cross check. I'm refreshing. I don't think I've received it yet. If you cannot I reply- send you on WhatsApp. Instructions में क्या बोला था Oh, रानी? sorry.
जो बोला याद करो, याद नहीं है तो मैं बताता हूँ. सेंड एज अ रिप्लाई टू द ईमेल जहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिला है. दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे. चलो स्टूडेंट्स, क्विक. 12 बजे तक का ही टाइम है. वी कैन नॉट पुश मच. पुश करेंगे बट ज्यादा नहीं कर सकते पुश. Sir, some problem is there. हाँ, दोबारा भेज देना बाद में. ठीक है, ईमेल पे रिप्लाई चाहिए मुझे, आंसर शीट. अब नहीं दे रहे हो तो बाद में चलेगा. अभी मैं आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ. अपना कॉल साइन के साथ पीडीएफ को नाम दोगे और क्वेश्चन पेपर रेफरेंस, जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर रेफरेंस आप फाइल नेम देखोगे, उस हिसाब से अगर आप लोग अपना पीडीएफ आंसर शीट का नेम करोगे तो और बेटर होगा आपके लिए भी. रोनी, करेक्शन, रानी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर पार्ट 2 वाइवा नाउ? प्रिपेयर्ड एज इन फिजिकली प्रिपेयर्ड. कीप योर वीडियो ऑन. Yes. बाकी आंसर्स तो पूछना ही है मुझे, आपको आए ना आए वो देखेंगे अपन. चलो, सो रानी प्लीज कम फॉर पार्ट 2. अभी यहाँ पे आपको ये assumptions रखने हैं that you will be walking and going to that interview room. Okay? And you will knock on the door. The door might be open, half open, closed, then push it and request, sir, madam, may I come in? जो भी होंगे अंदर देख लेना, अच्छे से स्कैन कर लेना. डरना नहीं है. डर लगता रहेगा बट हमें डरना नहीं है. देख लेना अच्छे से. ओके, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका मॉर्निंग या आफ्टरनून सेशन है. एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग अ सीट टू सिट. There might be two examiners sitting at the same desk or two separately seated examiners, one here, one there. Depends, TGC or WPC. जो भी केस है आपको पहले बताया जाएगा कहाँ जाना है. बैठने से पहले यू हैव टू से, मे आई हैव अ सीट सर, दिस मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और थैंक यू, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर. इतना तक आप कर सकते हो. ग्रीटिंग्स, रिस्पेक्ट. If you show that, it can add to your good luck factor in the exam. In case you are stuck, they will help you. If you do this much. Now, these are little secrets. आपको नहीं करना मत करो. सारे आंसर्स अच्छे देके जाओगे फिर भी पास हो जाओगे. बट अगर सारे आंसर्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में आपको रिजल्ट दिला सकती हैं. प्लस दे अंडरस्टैंड यू आर मैच्योर and you have studied and you have professionalism, so they might not mind pushing you even with a score of 50-60 on part 2 part 1. बट मेच्योरिटी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और आप मरते मरते 50-60 ला रहे हो, तो शायद वो बोलेंगे यार बच्चा थोड़ा और पढ़ लो, फिर आपको हम दे देंगे लाइसेंस. बस. दैट इज हाउ पास एंड फेल वर्क्स इन आरटी. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक अदरवाइज. हमें यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है. सो स्टार्ट ऑल दिस. कंसिडर आई एम डीजीसीए एंड आई एम डब्ल्यूपीसी, डजंट मैटर. एक ही हूं मैं, एक साथ ही सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको. Hello. Do you want to do some greetings? Yeah, carry on. Good morning, sir. Very good morning. Yes, sir. Can I sit? Yes, please. So, Rani, tell me something about yourself. My name is Rani Thore. I am from Pune, Maharashtra. And this is my second attempt. And I'm doing BSc Aviation degree from Bombay Flying Club, Mumbai University. And I have a clear DGCA papers. And now I'm planning to join a flying after this exam. Okay. So, Rani, what is VOR? VOR is the VHF omnidirectional range. And VOR works on
principle of phase comparison of 330 kilohertz. And VOR helps to measure the radius, measure the distance. Sorry. It's okay. Take your time. Okay. VOR's frequency is a 108 to 117.95 megahertz. It has a 160 channels, and we use a VOR for airways, airfield, homing, holding, and en route. VOR's type is the CVOR, DVOR, TVOR, and VOT. So CVOR is a conventional VOR, DVOR is a Doppler VOR, and TVOR is a terminal VOR. You don't know what is VORTAC? VORTAC so is many a types of VOR. taste VOR. No, that is VOT. Sorry. That is VOT. Test VOR is VOT. VORTAC. Tactical VORTAC. VOR. No, I was not aware. No problem. Tactical VOR is a VOR facility used by defense, but part of that VOR we use for commercial also. That is VORTAC. It was in your part 1 question. VORTAC full form is tactical VOR. There is, okay, good. You don't know what is ILS? Can you tell something Yes. about ILS? Yes. ILS is an instrument. ILS stands for Instrument Landing System. ILS provide the pilot visual instruction in cockpit. And ILS has a 3 components: localizer, glide path, and marker beacon. You don't know their abbreviations? Localizer and Yes. glide path? Lima Zulu is an abbreviation for a localizer. In a localizer works on What about glide path abbreviation? G golf path. Sorry, Papa, golf Papa. I think is Okay. Carry and on. marker beacon. Yeah. Localizer works in a VHF band. Its frequency is 108 to 11 decimal 907 megahertz. It has a 40 channels. And glide path works in UHF band. I don't remember the frequency of glide path, but marker beacons are a VHF band, and its frequency is 75 megahertz. And why do we use ILS? ILS for the initial approach to the runway. Okay. Do you know what is a radio wave? Yes. Radio wave is the electromagnetic Why do we call it electromagnetic wave? because it's a radio wave. It's a burst of electromagnetic energy. That's why we call it electromagnetic wave. And you know its structure? Yes. Electromagnetic wave have 2 components: electric component and magnetic components. And electromagnetic wave have a wave are a sinusoidal in nature, and the radio waves are the sine waves. And electromagnetic wave travels through the speed. Electromagnetic wave travels through the speed of light, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And the electrical and magnetic components, they are mutually perpendicular to each other in the direction of propagation.
Do you know what is polarization of a radio wave? Yes. Mm, I know, but now I'm not able to recollect. Okay. What is the difference between frequency and wavelength? Frequency is a uh, number of cycle per second, and wavelength is the distance of a wave travels in one cycle. Can you tell the units of frequency and wavelength? Yes, unit of a frequency is a hertz, and unit of a wavelength is the meter centimeter. Can you convert? Can you find out the wavelength of a frequency Yes, yes, sir. of 100 megahertz? Wavelength of a frequency signal, a signal with frequency 100 megahertz. The frequency is 100 megahertz. Can you find wavelength? It's a 30 meter. Cross check your answer. Give me a final answer. "100 megahertz." What is the wavelength? What did you say? 30 meter. 30 meter. It's wrong. Do you want to try again? Yes, sir. Three meter. Why did you get it wrong first time? I considered extra 0, so Where? Extra 0? 10 raised to the 8, so I put it Okay. extra 1 0. Okay. Now please go to that, sir. Now I'm WPC. You have been asked to move. So you'll say, "Thank you very much, sir." And yes, okay, good evening or good morning, sir. May I have a seat? You're seated. Now they'll ask you questions. Okay, so Rani, what do you mean by RT license? RT license is it conducts by the WPC. What is WPC? WPC stands for wireless coordination. WPC. Yes. Wireless planning and coordination wing. And Tell me something about WPC. WPC deals with the radio license, and WPC is so I have read everything, I know everything, but Do you know about ICAO annexures? yes. Which annexure is related to pilot licensing? Annexure 10.
aeronautical telecommunication. Pilot licensing. Personal license. I think Annexure you're 1 talking personal about license. RT annexure. No, I want. Yeah, which annexure? Annexure 1 personal license. 1. Okay. Do you know the documents for RT? Yes. Manual of RT. What is it? Document 4444. It's for air navy. But document 8400 for the ICAO abbreviation and code. Document 79010 for the location indicator. Okay. Do you know about the Telegraphy Act? Negative, sir. Have you not filled the RT form for exam? It's mentioned on that form. I filled the form, but There is a paragraph that talks about this. Don't recollect? no, sir. Do you know which aircraft rule deals with RT? Which aircraft rules 1937? Which rule deals with radio telephony apparatus? Rule number? Rule number 63. Are you not aware? No, sir. But you said you have cleared papers. You didn't clear Yes. regulations. Yes, I cleared regulation. Okay. Do you know anything about DGCA? Yes. Please give a few DGCA. important points about DGCA. DGCA is the Directorate General of Civil Aviation. DGCA is the regulatory body in the field of civil aviation, and it's a primary deals with the safety issues. And DGCA is also responsible for the enforcement of the civil aviation regulations, air safety standard and recommended safety standards and airworthiness standards. Where is the headquarters? DGCA's headquarters in New Delhi. New Delhi. Okay. Do you know? Tell a few points about ICAO. ICAO. ICAO stands for International Civil Aviation Organization. ICAO is the United Nations specialized agency. ICAO has a 90 plus member states. Total in 195 countries exist. 90 or 193? 190. No, not only 90 plus. No, it's 193 or 192. Almost all Yes. countries are a member of ICAO. Yes. So you're saying 100 countries less. You're talking about 20, 30 years ago. Modern day, we all are a part of the same agency, and that is the reason why we are safe. Okay, fine. You can go. Thank you very much. Thank you, sir. Most welcome. Very well done, Rani. कैसा लग रहा है? म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो. मुझे लगा आप गाना गाने लग गए हो. नहीं. To bust the stress. Nervous feel कर रहे हैं, sir. But sir, I read everything. I revised everything, but I don't know why. कैसा फील हो रहा है? हार्ट बीट्स फास्ट हो गई हैं क्या? Yes. बहुत और मिस्टेक्स हाथ भी ऐसे ऐसे होते. देख रहा हूँ, समझ रहा है मुझे. कितनी सारी मिस्टेक्स किया पार्ट 1 में.
क्या हो गया? कोलकाता में है, चेन्नई में है, कहाँ है हम लोग? किधर से किधर कॉल कर रहे हो? ये तो एटीसी आपको इतना अच्छा मिला है कि आपको कॉल्स करने दिया है। बुरा एटीसी होता तो नो रिस्पॉन्स भी चलते। क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा। आईका लोकेशन डेजिग्नेटर्स नहीं पढ़े हैं? आपको नहीं मिले? नई वाली शीट बना के भेजी आपको आईकैट्स की। तो अच्छे से पढ़ना है ना। वीईसीसी क्या होता है? कोलकाता या चेन्नई? पता है सर, कोलकाता, बट हाँ, ये होता है। बट इसी को तो रेक्टिफाई करने के लिए स्ट्रैटेजी दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट अच्छे से सब स्टडी कर लो। चार्ट ट्रैक नहीं किया था आपने? पुराना नया इतना बड़ा एरर तो नहीं होना चाहिए था। ये मद्रास के लिए है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, इसलिए VOMM मद्रास है। हमें क्या VCC चेन्नई समझ सकता है, बिकॉज वी थिंक चेन्नई, CC चेन्नई। जो कोलकाता के से है, बट VECC इज फॉर कैलकाटा, ओल्ड नेम्स। तो ये पुराने एयरपोर्ट के नाम पे ये कोड्स बने हैं जो नए एयरपोर्ट के नाम से मैच नहीं करते हैं अभी। तो हमें बहुत फोकस रखना है कि मेजर एयरपोर्ट्स, मेट्रो सिटीज के लोकेशन डेजिग्नेटर्स तो हमारे पक्के होने चाहिए। कैलकाटा, पोर्ट ब्लेयर। तो ये पहली चीज से प्रैक्टिस मुझे करनी है, और जरूरी है कि मैं डिपार्चर डेस्टिनेशन ट्रैक कर लूँ, रूट ट्रैक कर लूँ, ऑल्टरनेट चेक कर लूँ 2 बार। तो 2 बार आप करो, आपका गलती नहीं होगी। क्यों हुई ये गलती? गलती से कोलकाता चेन्नई बोल दिया, या आपको लगा आपको चेन्नई से रियल, पोर्ट ब्लेयर जाना है? लगा क्या आपको? मुझे लगा कि मैं मतलब चेन्नई से जा रही हूँ पोर्ट ब्लेयर। तो काकेड वाकेड कैसे आएगा बीच में? तो तब मैंने देखा तो पता चला कि गलत किया कोलकाता है। तो यस, तो फिर चेन्नई क्यों नहीं बोला? कोलकाता क्यों नहीं बोला? करेक्ट क्यों नहीं किया कॉल? कोलकाता चेन्नई के साथ ही क्यों जा रहे थे आप? बीच में मैं डिसरिगार्ड भी, मतलब पूरा कैसे डिसरिगार्ड करो, फिर कुछ समझ नहीं आया। मतलब डिसरिगार्ड करना नहीं आता तो क्या प्लेन कहीं भी ले जाएंगे, क्रैश कर देंगे इतनी छोटी सी चीज के लिए? सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हमारी। हमें सेफ्टी पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन गलत हो गया, हक से डिसरिगार्ड बोलो। ये तो आरटी आपको प्रिविलेज देता। प्रोसेस मत चेंज करो। कहाँ से कहाँ प्लेन ले जा रही हो? फ्यूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब डिसोरिएंटेशन हो गया ना ये डिसोरिएंटेशन हमें अवॉइड करना है। और डिसोरिएंटेशन कैसे अवॉइड करेंगे? फोकस करके एकदम, बस। फोकस, बी इन द मोमेंट। हम रिजल्ट से डर रहे हैं, हम फ्यूचर से डर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, इतना सारा डर बैठा हुआ है। बट एज अ पायलट हमें वो सारा डर हटा के कॉन्फिडेंस के साथ ही फ्लाई करना है। अभी एग्जाम में मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत जाओ। रियलिस्टिकली पायलट्स को यही बोला जाता है, आपका मन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हेल्थ नहीं है, जो भी, ऑनेस्टली बोलो, मत जाओ आप। छुपाओ मत, झूठ मत बोलो। समझ रहे हो आप? तो आपको मैं बोल सकता हूँ आप रेडी नहीं हो तो एग्जाम में देने मत जाओ। पर आप बोलोगे नहीं सर एग्जाम में मैं तो ट्राई करूंगी। ट्राई कर रहे हो तो रेडी होके जाओ आप। वो फीलिंग रेडी वाली होनी चाहिए। फीलिंग अंडर प्रिपेयर्ड की नहीं होनी चाहिए। वहां आपकी वो फीलिंग आएगी ना, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आपकी अपने आप इग्नोर हो जाएंगी, बिकॉज आपने भी पढ़ा, आपको भी पता। तो व्हाट इज डिसोरिएंटिंग यू इज अ डिस्ट्रैक्शन। द डिस्ट्रैक्शन कुड बी नर्वसनेस, इट कुड बी पब्लिक स्पीकिंग, प्लस इतने सारे बच्चे जज करेंगे, हंसेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेशर होता है। बट हमें कुछ कुछ नहीं सोचना है। मुझे मेरी एयरक्राफ्ट को सेफ रखना है, और मुझे मेरे आरटी कम्युनिकेशन को क्रिस्टल क्लियर रखना है, एंड लॉजिकली लोगों से बात करनी है, सो दैट आई डोंट गेट रॉन्ग और आई डोंट गो रॉन्ग। बस इतना ही है। आपकी रेट ऑफ स्पीच अच्छी है, लिखना अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी समझ में आ रहा है, ज्यादा फंबलिंग भी नहीं हो रही है। एरर कौन से हुए हैं? एरर रॉन्ग कॉल साइंस के हुए हैं, रॉन्ग रूट्स के हुए हैं, और कपल ऑफ एरर्स क्वेश्चन समझने में हुए हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपना अभी आंसर शीट खोल के रखो, एंड मैं आपको फटाफट फीडबैक दे रहा हूँ। आई विल करेक्ट योर कॉल्स एंड आई शो यू द करेक्ट कॉल्स। क्विकली करेक्शंस कर लो और डिस्कशंस कर लेना। We will have 5 to 10 minutes to do this at max. 12:30 we're gonna wrap up students. पहले इस पे फटाफट ध्यान देना, फिर अपने डाउट्स जो भी होंगे बताना, एंड सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑटोमेटिकली। विल मेक इट वेरी सिंपल। बिफोर आई स्टार्ट, कुछ है? शेयर योर एक्सपीरियंस with me for your part 1 and part 2. How do you feel about part 1 and part 2? Do you think you will clear part 1 and part 2 based upon this performance? I don't think so. Okay, yeah, I could clear part one, but क्यों नहीं part 1? I knew the questions I read because you have आपने ये लिया भी है पहले, but पता नहीं क्या हो गया, टेंस थी मैं तो।
पता नहीं क्या हो गया नहीं बोलेंगे हम, क्या हो गया उस पर फोकस करेंगे। आप यस। ऐसे मत सोचो मुझे नहीं पता क्या हुआ, बोलो मुझे पता है क्या हुआ और क्यों हुआ, मेरे को उस पर काम करना है, अवेयरनेस चाहिए हमें। हम बोलेंगे ना पता नहीं क्या, मेरी गलती नहीं है, तो फिर हम लॉस्ट रहेंगे, हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। बट वो रियलिटी नहीं है। समझ रहे हो? मैं समझा रहा हूँ आपको, आप समझो और वैसा करो, सिंपल है। आप बोलोगे सर मैं समझने की ट्राई कर रही हूँ, जो भी हुआ आई ट्राई टू अवॉइड इट। सिंपल। क्या हुआ, मेरी गलती नहीं थी, हम वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, वॉज आई लॉस्ट, वॉज आई टेंस्ड, वॉज आई डिस्ट्रैक्टेड, यस, हाउ डू आई वर्क ऑन दैट, सिंपल है। 5 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रेथ्स लेनी है, सब सेंटर हो जाता है। कितना भी बुरा सिचुएशन हो, तो दिस वर्क्स फॉर एवरीवन, be it high performance of live performances on stages, be it actors or be it cricketers, be it any footballer, anything. This is how they center themselves. Everybody goes through this. I'll tell you one story about my student. Okay, he's elder to me. He had a gap of 10 years because of that recession of 2008. He restarted his career. Okay, he restarted with RT, and that's how we met. That time I used to be a freelance teacher for these things. I used to teach at other colleges also. So I remember his training and everything. For him to learn RT, clear RT from old to new RT was a task. And then demonetization time, he went for type rating again. He renewed his licenses and everything. And he got a job. He got a job with one of the new airlines in India, and he was very happy. Now, although he had a gap of 10 years, after getting a job 2 years, he's well settled. He has a baby. Everything is fine. I keep talking to him because he's a special student for me. Every now and then we talk. He says say one thing. He says the job is very stressful. He says सर तुम्हारा जॉब बहुत आसान है, तुम्हें ना मेरे एयरलाइन में आके ट्रेनिंग दे दो। He says हमारा जॉब सच में बहुत 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 ज्यादा फोकस रिक्वायर करता है, बहुत ज्यादा। एंड माइंड इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि कभी कभी माइंड को फील होता है कि मुझे भी रिलैक्स होना है। एंड दैट्स व्हेन आई फील योर जॉब इज बेटर देन माय जॉब, because you don't have to worry about those elements. You just sit on the ground and teach, although it's important, but it doesn't consume your mind as much as it does for me as a pilot that I've just started. It's been just 1 year 2 year that he's been flying as a PIC co-pilot, and that is the truth. समझ रहे हो आप? ये ऑनेस्ट फीडबैक कोई नहीं देगा, कोई पायलट ये वर्ड्स यूज ही नहीं करेगा। उनको लगेगा पीपल विल जज देम, पीपल विल थिंक ही और शी इज वीक, बट दे ऑल गो थ्रू दैट, दे ऑल आर फेसिंग दैट चैलेंज, and they perform. In order to perform, they have to put their mind at a capacity of 500% to 1000% initially. And then slow and steady, the mind gets used to it to make that your base level 100%. And it's a everyday thing. ये आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग का जॉब आपसे डिमांड करेगा आगे जाके। ठीक है, इसका छोटा सा हिस्सा भी अगर आप अभी सीख लेते हो आरटी में, तो ये आगे जाके आपको काम ही आने वाला है। समझ रहे हो आप? इसका छोटा सा हिस्सा क्या है? Don't take it as an exam. Take it as a situation, a simulation where you cannot go wrong even with one mistake, because one error can cause a chain of errors that can result into a disaster. आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी करो। हाई पावर रनअप आप पार्किंग बे पे नहीं कर सकते हो। यू नीडेड टू टैक्सी टू द डम्बल एरिया ऑफ अ रनवे, वो आपने नहीं किया। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में हिंट आया मुझे टैक्सी मांगनी है, आप टैक्सी वे चार्ली मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो चार्ली, कहाँ जाना है? इलॉजिकल लग रहा था वो। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमें जज कर जाएंगे कि यार बच्चे में कॉमन सेंस की थोड़ी कमी है। लैंग्वेज ठीक है, कॉमन सेंस नहीं है, तो कॉमन सेंस के ऊपर वो जज करेंगे। लैंग्वेज अच्छी है, ये कॉमन सेंस का ध्यान रखो, यू विल क्लियर पार्ट 1 इजीली। ये कॉमन सेंस या तो प्रैक्टिस के साथ आता है, या एक्सपीरियंस के साथ आता है, या ट्रेनिंग के साथ आता है। आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास प्रैक्टिस है, इन दोनों के थ्रू आपके पास एक्सपीरियंस है। पुश करो जल्दी से जल्दी इसको लाने की। किसी को 6 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं। जब तक वो रेडी नहीं है तब तक उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो पोजीशन नहीं मिलेगी। एयरलाइन इतनी भी फेवरेबल नहीं होगी कि आपको 1 साल दे देगी। उनका टाइम होगा, 2-3 महीने में नहीं हुआ तो यू आर रिजेक्टेड, समबडी एल्स विल टेक योर प्लेस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हम पैसा दे रहे हैं ट्रेनिंग का, हमें पास करना, हम नहीं पास हुए तो हम फेल हो जाएंगे।
तो उस हिसाब से हमें खुद से अंदर से रखना है कि हाँ मैं मिस्टेक नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो एक एसेंस है जो यहाँ मिस हो रहा है, जो आप खुद बोल रहे हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। ये एक छोटी सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओवरऑल, जो आज नहीं तो कल आप में डेवलप होनी है। नो बडी विल चेंज दैट। तो सोचो मत मुझे नहीं आता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप बन ही जाओगी परफेक्ट। नो बडी इज टेकिंग दैट अवे। हम चाहते हैं कि हम 2 दिन में हो जाएं अब, तो लेट्स पुश इट, बिकॉज सब कुछ है। तो सारा फोकस इस पे होना चाहिए बस। 24 घंटे हैं दिन के, उसमें 8 घंटे सो रहे हो, तो बाकी जितने भी बचे 16 घंटे आपका ध्यान इसी चीज पे रखो आप, बस सिंपल। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल। अब बस फोकस रखो, ये अपने आप आ जाएगा। आपका सबकॉन्शियस अपने आप गाइड करेगा आपको पढ़ने वक्त, रिविजन्स के वक्त, प्रैक्टिस के तब। बट यू नीड टू नो, अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मेरे में नहीं आता है तो डोंट बीट योर सेल्फ अप, इवेंचुअली आ जाएगा। जस्ट ट्राई टू पुश इट के आज जल्दी आ जाए मेरे पास, बस ये रखना। इवेंचुअली यू ऑल आर गोना फ्लाई। आप सब सक्सेसफुली होने वाले हो। हाँ, कोई आगे कोई पीछे, सब डिपेंड करता है। लेट्स पुश इट सो दैट हम सब आगे आगे सब कुछ कर लें। तो क्यों याद नहीं आया आपको? टैक्सी करना है, डंबल एरिया, हाई पावर रनअप, ड्यूरेशन नहीं बताया, डुअल इंजन या सिंगल इंजन वो नहीं बताया। देखा जाए तो कितना कुछ मिसिंग है इस कॉल में। प्लस आपने चेन्नई ग्राउंड को कॉल कर लिया। फ्रीक्वेंसी भी शायद सही नहीं बोली आपने, क्योंकि मिसमैच हो रहा था। स्ट्रक्चरिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन फिर भी कॉल अच्छा था। तो दैट इज योर यूएसपी। अच्छा है, बेसिक्स आप बहुत अच्छे फॉलो कर रहे हो। कुछ मिस्टेक्स आपने की कि अपने कॉल को एंड नहीं किया कॉल साइन पे जब रिस्पॉन्सेज दे रहे थे, वो एक मेजर सिली ब्लंडर हो गया। वो नहीं कर सकते हम। जहां जहां पायलट एटीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपने दोबारा से स्टेशन रेस किया। वाज वेरी हैप्पी। द कॉल हैज, द मॉक हैज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव। तो मुझे तुम्हारी जरा भी टेंशन नहीं है अभी। ये छोटी मोटी चीजें हम आराम से फिक्स कर सकते हैं। सो यू हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ लॉट रानी। आपका ध्यान मिस्टेक्स पे रहेगा डेफिनेटली, बट इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपने वहां पे भी मिस करती, तो मैं बोलता यार आपको तो 30-40 मिल रहे हैं, ऐसा हो जाता। देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच यू आर डूइंग, कैरी ऑन विद दैट। बट कुछ चीजें हैं जो मिस हो गई हैं। नो रिस्पॉन्स यहाँ लिखना है आपको जब भी एटीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपने अपने लॉग्स में लिखा नहीं है नो रिस्पॉन्स। आप लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आरसीएफ सिमुलेट हो रहा है? Yes. बट वेरी गुड, 5 से 10 सेकंड में आपने रिप्लाई दिए सारे। अच्छा लगा मुझे, दैट वाज वेरी गुड, वेरी नेचुरल। एक टाइम के बाद जब एग्जामिनर थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर रहा था, आप में भी कॉन्फिडेंस आ रहा था। अच्छा है, ऐसे एग्जामिनर्स भी मिलेंगे आपको, या खराब वाले भी मिलेंगे। मैंने दोनों ट्राई किया बीच में प्रेशर डालने का, एक टोन से और एक हेल्पफुल वे से। यू डिडंट गिव अप इन द प्रेशर एंड आई हेल्प्ड यू फिनिश द पेपर एंड यू सक्सीडेड इन फिनिशिंग द पेपर। तो बहुत अच्छी चीज थी, बट डोंट एक्सपेक्ट एवरी एग्जामिनर टू बी दिस हेल्पफुल। पुराने आपने मॉक देखे हैं, कितना रूड एग्जामिनर रहता है यहाँ पे, आपको पता है। बट ये अच्छा था। शायद ये पार्ट 1 क्लियर ना हो पाए, मेजर ब्लंडर हुए हैं, बट शायद हो भी पाए, बोल नहीं सकते। अगर आप बस कोलकाता ग्राउंड के साथ स्टार्ट करते, सो यू हैड अ गुड चांस ऑफ बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द बॉर्डर लाइन, मिनिमम से मिनिमम। बस ये कोलकाता कोलकाता का मिस्टेक नहीं होता तो आई थिंक आप आराम से 50-60 ले आते। पार्ट 1 शायद मैं पुश कर देता आपको, तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक ये छोटा एरर है जो आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करोगे। रॉन्ग कॉल साइन, रॉन्ग डिपार्चर, रॉन्ग डेस्टिनेशन, वो कभी नहीं करना है। आई थिंक वो इजी है अवॉइड करना। यहाँ पे मैंने नॉट अप्रूव्ड लिखा। आई वाज ट्राइंग टू गिव यू द हिंट दैट आप पार्किंग बे पे नहीं कर सकते हो, गो टू डम्बल। हिंट दे रहा था इनडायरेक्टली मैं, इंटेंट बताओ इंटेंट बताओ। रिक्वेस्ट टैक्सी वे बोला, आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा था, पूरा याद नहीं आ रहा था। रीड बैक आपने ठीक दिया, थोड़ा करेक्शन वरेक्शन बोलने में दिक्कत हो रही थी। स्टूडेंट्स रिमेंबर, वेन एवर यू से करेक्शन, यू स्टार्ट री करेक्टिंग योर सेल्फ विद द लास्ट करेक्ट वर्ड यू सेड। रानी 2-3 जगह पे आपने वो फॉलो किया, 1-2 जगह पे मिस किया है। आई थिंक इट्स गुड। 2-3 जगह पे भी फॉलो किया है, सब जगह फॉलो करना। यू डेंट एंड विथ योर कॉल साइन। फिर मैं बोला यार दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। हाई पावर रनअप नहीं हो रहा है, फिर स्टार्टअप मांग रहे हो, क्या हो रहा है? स्टार्टअप क्या है, हाई पावर रनअप क्या है? एक ही चीज है। हाई पावर रनअप बस ये है कि मैं एयरक्राफ्ट के इंजन को 50 to 80% थ्रस्ट लेवल पे सिमुलेट करूंगा, चलाऊंगा, बट प्लेन को उड़ाऊंगा नहीं
और भगाऊंगा भी नहीं, एक जगह पे रखूंगा टू टेस्ट इंजन पैरामीटर्स और सम सिस्टम्स। उसके लिए मुझे स्टार्टअप लेना है, तो स्टार्टअप पहले लेना होगा फॉर हाई पावर है ना। स्टार्टअप हाई पावर है ना, बहुत कॉमन सेंस इलॉजिकल लग रहा था यहाँ पे, तो यहाँ एग्जामिनर ये छोटी छोटी सी देख के बोलेंगे यार ये तो कॉमन सेंस नहीं यूज कर रही है, इसको थोड़ा और टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, अरे एग्जामिनर बोल रहा है यार ये कुछ नहीं है, बस सी स्ट्रेस्ड, पता है ये ऐसे एरर है, कोई जानबूझ के नहीं करता, तो ये पता है। लैक ऑफ फोकस हो गया, डिसोरिएंटेशन हो गया, नर्वसनेस हो गया, दिखता है, साफ साफ दिखता है ये, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? सो टेक्निकल कोई फॉल्ट मुझे लग नहीं रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव स्पोकन अबाउट हाउ टू फील अबाउट इट, सो आई थिंक दिस कैन बी फिक्स्ड। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेक्स्ट मॉक एंड वेदर वी यू वर्क ऑन द फीडबैक और नॉट, पता चलेगा अपन को। एंड नहीं किया कॉल साइन से, फिर भी आपको हिंट दिया से अगेन ऑल आपका कॉल साइन लेके, फिर भी आपने रिप्लाई दिया, फिर भी आपने कॉल साइन नहीं बोला, फिर से आपको चांस दिया गया, फिर आपने अच्छे से आई से अगेन बोल के बोला। सो देयर आर वेरी अ फ्यू गुड थिंग्स दैट यू हैव डन इन बिटवीन एवरी नाउ एंड देन दैट मेक्स अस फील दैट हाँ इसको आता भी है, अच्छे से आता भी है, तो दैट इज गुड। तो जहां वो आ गया और मिस्टेक से, इसका मतलब मिस्टेक्स रिड्यूस कर लो, बाकी आप परफेक्ट ही हो। ये परफेक्ट चीजें नहीं होती से मिस्टेक्स होती तो हमें डर लगना चाहिए था, अरे ये क्या हो रहा है। बट परफेक्ट चीजें हैं और मिस्टेक्स है, मतलब बस मिस्टेक्स हटा दो, आप रेडी हो क्लियर करने के लिए। फिर से आपको बोला से अगेन ऑल, हाई पावर अनअप नॉट अप्रूव, ठीक है रीड बैक दे दिया, फिर इंटेंशन मांगा तो नो रिस्पॉन्स। यहाँ बोले बस मेरे से नहीं होता, अब मैं थक गई, क्या चल रहा है। रिपोर्ट इंटेंशन बोला, आपको नहीं समझ आया इंटेंशन बोला है क्या बोला था, बोल सकते थे रीड यू टू से अगेन विक्टर टैंगो रोमियो अल्फा नवंबर, बट आपने कुछ बोला नहीं। मैं बोला ठीक है कुछ नहीं बोल रही, जाने दो, मन नहीं होगा अभी प्लेन उड़ाने का, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आई थिंक यू गेट 5 on 10। ओके, 5 भी ज्यादा ही दे रहा हूँ मैं, कंसिडरिंग। चलो मैंने भी चेन्नई ग्राउंड बोल के रिप्लाई कर दिया, चेक करना था आरटी आता है नहीं आता है, बाद में मैंने बता ही दिया आप सही कॉल करो, एंड आपने सही चूज कर लिया बाद में एटीसी, एंड आपने दोबारा पूछा सर दूं क्या दोबारा कॉल में, तो अच्छा लगा वो सुन के कि चलो शी इज रेडी टू करेक्ट द एक्चुअल कॉल बिफोर हैंड। जो उसने कोलकाता को दिया, चेन्नई को दिया था, वो वापस से कोलकाता को देना चाहती है। जब उसने रियलाइज किया कि वो मैं तो गलत कर रही हूँ, मैं बोला नहीं आप 3 से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, कॉल तो हो गया। जनरली एग्जामिनर चेन्नई, आपने बोला चेन्नई से कॉल देंगे नहीं, यहाँ यहाँ तो बस मैं चाहता था कि आप पूरा एक्सपीरियंस ले लो अच्छे से, ठीक है, और दे भी दिया तो क्या अच्छा हमारे फेवर में काम आएगा। वन ब्रावो। अभी पोर्ट इंजन फायर, पैन पैन किधर है, फायर पैन पैन, फायर तो पैन पैन, तुम बोली आग लगी, आग मैंने इंजन बंद कर दिया, मेरे को वापस से स्टार्टअप दे दो, तो क्या हाई पावर के लिए क्या अलग इंजन यूज कर रहे हो और स्टार्टअप के लिए क्या अलग इंजन यूज कर रहे हो। इंजन में आग लगी है, आपने चलो इंजन तो बंद कर दिया, अच्छा लगा, ना पैन पैन बोला, ना एक्सटिंग्विशर्स मंगाए, ना फायर फाइटिंग मंगाए, पर दोबारा से स्टार्टअप भी मांग रहे हो, क्या हो रहा है। क्या करोगे एज अ पायलट जब इंजन में आग लगी है तो। फायर फाइटिंग सर्विस। पैन पैन सबसे पहले, सब यस, कुछ पैन स्टॉप पैन। होना चाहिए, अगर इंजन फायर विंग में लग गई, ब्लास्ट हो गया, आप सब वहां के वहां चले जाओगे। तो वो क्यों नहीं समझ आया लॉजिक वहां पे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर है, हमें आंसर छापने हैं बस, हमने पायलट सीट पे नहीं रखा ना खुद को। बताओ कैसे हुआ ये यहाँ पे, और पैन पैन क्यों नहीं बोला यहाँ पे। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड क्विकली से। ये प्रैक्टिस है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आपने गलत बोला सही बोला, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। जल्दी जल्दी, वी आर शूटिंग का टाइम। यस, मुझे लगा कि अब इंजन फायर हो गया तो पहले मैं इंजन स्विच ऑफ करूं। वो अच्छा किया, वहां तक परफेक्ट था। वो, और फिर जब मैंने स्टार्टअप के लिए मांगा तब मैं मतलब भूल गई कि मैंने मतलब इंजन ऑफ किया है। फिर मैंने फिर से देखा तो डिसरिगार्ड किया वो पूरा। डिसरिगार्ड के बाद आपने बोला अरे आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे पता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है अच्छा लगा वो, अच्छा लगा वो, ऐसे हेल्प मांग लेनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब यू डोंट नो व्हाट टू डू। स्टूडेंट्स डिसरिगार्ड का एक रूल है, प्लीज फॉलो। अगर डिसरिगार्ड बोल रहे हो ना, तो जिनको कॉल किया है उनको प्रॉपर डिसरिगार्ड बोलो, डब्ल्यूज फॉलो करके। चेन्नई ग्राउंड, विक्टर टैंगो रोमियो अल्फा नवंबर, डिसरिगार्ड। प्लीज रिमेंबर दिस एवरीवन, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ये चीज, रानी बहुत बार बोली है चीजें सेशन में, आज याद कर लो ना भूलने के लिए।
इस पे फोकस नहीं जा रहा है, ये मिस कर जा रही हो आप, बट अच्छा लगा डिसरिगार्ड बोला तो सही, बट कैसे बोलना है, उस एटीसी का कॉल साइन लेके उसको डिसरिगार्ड बोलना है अच्छे से, सिंपल, यू गेट मोर पॉइंट्स. Turning ground, Vichango during engine run up, port engine on fire, switching off, engine request instructions. ये ठीक था. ये डायरेक्ट दे देते ये कॉल कोलकाता ग्राउंड को, यहाँ पर आपको 8 से 7 मार्क मिल जाते. यू प्लेड इट सेफ एंड यू प्लेड इट परफेक्ट आफ्टर डिसरिगार्ड. ये यहाँ दिमाग सही चला है आप, है ना, गुड. फिर भी आपको 6 ही दे रहा हूँ मैं बिकॉज रॉन्ग कॉल साइन एंड ऑल. फिर भी आपको ज्यादा ही मिल रहे हैं बिकॉज समवेयर योर क्वालिटी वॉज गुड, सो दैट इज गुड. इतने एरर करके भी देखो आपके बेस क्वालिटी अच्छी रखने का फायदा देखो आप. जहां आपको कोई सोचता सर मेरे को 0 मिल रहा है, मैंने कोलकाता की जगह चेन्नई कॉल कर दिया, आपको 11 मिल रहा है 20 में से. तो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड कवर अप योर वीकनेसेस. कौन रोकेगा पास होने से? कोई रोक ही नहीं सकता. क्यों रोकेंगे एग्जामिनर? तो खुशी खुशी आपको पास करेंगे. एंड बैकग्राउंड में वो लोग बोलते हैं देखो यार कुछ बच्चे डिजर्व करते हैं, सच में अच्छा लगता है उनको पास करके. बाकी लोग क्या बोलते हैं उनके बोलने पे मत जाओ. एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर 1500, स्केड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर अराउंड था 1400. ये पता नहीं 0430 कहाँ से आ गया आपका. फ्रीक्वेंसीज भी सब गलत रीड कर रही हो. 132.45 है तो आप I 133.45 use बोल रहे this हो. ऐसे chart. नहीं. Means I refer this मतलब अभी वाला यू chart. रेफर द चार्ट, लेकिन आपको जो रियल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? कितने बार बोला यूज द सेम चार्ट, यूज द सेम चार्ट, यूज द सेम. पहले बोला तो ओरिजिनल कर लो, फिर बोला यूज द सेम चार्ट. तो जो जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उस पर फोकस नहीं जा रहा है. अगेन फोकस इज ऑन ओ मेरा एग्जाम है मैं फेल हो जाऊंगी. दो ही चीज पे फोकस रहेगा तो वही होगा. द थॉट्स वर्क लाइक दैट. थॉट को हम बोलेंगे हमारे प्रिपेयर्ड नहीं है तो हमें रिजल्ट भी वही मिलेगा जो बिना प्रिपरेशन के आता है ना. तो पॉजिटिव थिंकिंग, चलो ठीक है पूरी दुनिया बोलती है पॉजिटिव थिंकिंग, यहाँ वो कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ठीक है वो अभी इग्नोर करेंगे यहाँ पे, बट आगे भी रूट्स वूट्स में आपने आगे पीछे रीड किए हैं, नर्वसनेस में आके आगे पीछे लेटर्स बोले एक दो जगह पे आपने, तो उसका आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको सिंपल वेदर डेविएशन मांगना था. प्रोसीजर प्रोसीजर बोला ही नहीं आपने वेदर डेविएशन का, आप रीराउट कर रहे हो. Would like to turn right or left for 15 nautical miles. At 10 nautical miles, it climb or descend 300 feet. Duration 10 minutes to avoid weather. Request weather deviation. कोलकाता कंट्रोल से पूछना था. सिंपल. डेविएशन हो गया, फिर रिजॉइन करो रूट को और जाओ. सिंपल वेदर डेविएशन. यहाँ पे आपको नो रिस्पॉन्स मिलता, फिर आपने अच्छा किया, आपने दूसरे एटीसी को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स, आपको समझ में आ गया. ठीक है, आपने भुवनेश्वर अप्रोच को ट्राई किया, नो रिस्पॉन्स, समझ में आ गया. अब आपको क्या करना था, वेन एवर यू आर डेविएटिंग ऑन योर ओन इट्स अ पैन कॉल. तो आपने ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड कॉल डाल दिया वहां पे, तो आपको आरसीएफ को अच्छे से स्टडी करना है. यहाँ डेविएशन ऑन ओन था. ड्यूरिंग आरसीएफ डेविएशन ऑन ऑन ओन विल ऑलवेज बिकम अ पैन कॉल, not a transmitting blind call. When you're not deviating on your own, when you're flying as per the flight plan and have RCF, only then it's transmitting blind call. वो नॉर्मल कॉल होता है वेर यू रिज्यूम एज पर योर नॉर्मल नेविगेशन एज पर द फ्लाइट प्लान. रिसीवर फेलियर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है, खुद से अज्यूम मत करो. जस्ट ड्यू नो रिस्पॉन्स फ्रॉम कोलकाता कंट्रोल, सिंपल. एंड फिर खुद से डेविएशन करो, सेम प्रोसीजर. टर्निंग राइट 15 nautical miles at 10 will climb 300 feet, will maintain parallel on deviated track, duration 10 minutes, all exterior lights on, keep a lookout. यहाँ पे आप गड़बड़ नहीं कर सकते. तो यहाँ रिवीजन के टाइम अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. याद रखो मास्टर क्लास में अच्छे से समझाया ये सब. यू हैव ऑल द सोर्सेज यू नीड. अच्छे से पढ़ो, बैठो 8-10 घंटे आराम से पढ़ो विद ब्रेक्स, कुछ मत करो और सोचो मत. अच्छे से स्टडी करो, मास्टर करो. 1-2 दिन का काम है आपका बस, ज्यादा से ज्यादा. डोंट डू डोंकी वर्क. बी कॉन्फिडेंट एज अ पायलट एंड देन वर्क. सब आपको फील होगा एकदम. रीरूट का आइडिया ठीक था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग वेदर डेविएशन एज अ फर्स्ट ऑप्शन. वो आपने यूज नहीं किया ट्रेनिंग में. एंड ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड नहीं होगा, बट ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड आपने बोला विल कॉल अगेन एट बसबो. ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड भी कर रहे हो तो उसको 2 बार ट्रांसमिट करना है. बोलोगे आई से अगेन एंड पूरा कॉल वापस देना है. तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी या तो पढ़ने में नहीं है या तो रिकॉल करने में नहीं है. अभी आप बोल रहे हो सर मैंने सब पढ़ रखा है, तो फिर आपने रिकॉल नहीं कर पाए हो बस.
वो रिकॉल क्यों नहीं हुआ है, शायद वो प्रेशर की वजह से हुआ, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर लिया है। और अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज पढ़ लो अच्छे से, टाइम है हमारे पास। और बाद में भी नहीं समझ आ रहा बोलना, सर एक बार सारे कॉल पैटर्न समझा दो, 1-1.5 घंटा का सेशन लगेगा, ले लेंगे वो भी अपन, क्यों नहीं लेंगे, सबको फायदा होगा आपके साथ साथ, है ना। बट पहले खुद से करो, बिकॉज यू नो एंड यू हैव स्टडीड इट। नहीं तो फिर डिपेंड करोगे, फिर वापस से वही प्रॉब्लम है, तो जितना भी सिखा दो आपको 20-30% ही याद रहेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। यहाँ पे भी आपको मैं दे रहा हूँ 11। क्वेश्चन नंबर 3, वाइजैक टावर को क्यों कॉल कर रहे हो आप? एयरप्रॉक्स है, कंट्रोल को ही जाएगा, आपके फ्लाइट लेवल पे हुआ है आपके साथ। वाइजैक टावर वावर तो बहुत लो फ्लाइट लेवल पे होगा। आप तो वाइजैक टावर है तो क्या हो गया, आप तो जो कंट्रोल में हो आप उससे ही बात करोगे। एयरप्रॉक्स था ये, आपका फ्लाइट लेवल थोड़ी चेंज हुआ है। और वाइजैक थोड़ी ना लैंड करने वाले हो, क्या वो ऑल्टीट्यूड तक निकले हो। वाइजैक टावर का ऑल्टीट्यूड चेक करो, एयर स्पेस चेक करो, आई डोंट थिंक यहाँ पे वाइजैक को कॉल जाएगा। फ्लाइट लेवल 50 तक ही है, देखो सीटीआर के अंदर क्या लिखा है वाइजैक पे, क्वेश्चन पेपर के साथ जो चार्ट है वो देखो, फ्रैक्शन दिया है 50/GL। फ्लाइट लेवल 50 तक ही है, और वो भी सिर्फ 25 नॉटिकल माइल्स। आप वाइजैक पे हो, बट आपका ऑल्टीट्यूड क्या है फ्लाइट लेवल पे चेक करो, 350। तो आप टावर को कैसे कॉल कर रहे हो? कोलकाता कंट्रोल को करो या चेन्नई, आप कोलकाता एफआईआर के अंदर ही हो तो आप कोलकाता कंट्रोल को कॉल करो यहाँ पे। एयरप्रॉक्स था, यहाँ पे करेक्शन भी यूज नहीं किया आपने। एयरप्रॉक्स सेफ्टी, एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन, एयरप्रॉक्स सेफ्टी करेक्शन, एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन। मेरा ये पोजीशन है, अनदर एयरक्राफ्ट पास माय फ्लाइट लेवल एट सो एंड सो हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज माय पोजीशन, दीज आर माय एस्टिमेट्स, दिस इज माय ईटीए। वो भी पूरा बोलना है ना इस कॉल में, पूरा पोजीशन रिपोर्ट दे देना है, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। एयरप्रॉक्स का हो जाता है, उसके बाद डाल दो पोजीशन रिपोर्ट एलिमेंट्स, भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। आईएमसी कुछ बोल रहे आ गया, फिर कुछ बोले नहीं, मैं बोला चलो और बच्चे को पेपर तो कंप्लीट करवाता है, क्या पता आगे और अच्छे परफॉर्मेंस हो जाए तो मार्क्स ऐड हो जाए। आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ द एग्जामिनर्स थिंक द माइंडसेट, ताकि आप लोग को और एक स्टेप आगे रहने में मदद मिले। कंडीशंस की कोई बात ही नहीं थी बोलने की, आईएफआर भी बोल सकते तो, बट ठीक है, अच्छा लगा कुछ क्रिएटिव यूज कर रहे हो आप। बट बहुत कुछ डाल सकते थे इस कॉल में, आपने बहुत कुछ नहीं डाला। इजी था, स्कोरिंग था, इस पे 20 में से 20 आने चाहिए थे। Question number 4, elevator stuck, primary control stuck is a mayday call, students. Distress, elevators, ailerons, rudders, structural damage, mayday। अगर कुछ गलत लिखा है हमने तो उसको करेक्ट कर दो। प्राइमरी कंट्रोल एलिवेटर इज अ mayday, एलिवेटर स्टक हो गया, आप नीचे नहीं उतर पाओगे, फोर्स लैंडिंग होनी है बहुत बुरी। यू शुड सी द मूवी फ्लाइट का ओपनिंग सीन, डेंजल वॉशिंगटन। इट्स अनरियलिस्टिक, बट उसमें सेम चीज होती है, एलिवेटर स्टक हो जाता है। वो क्या दिमाग लगाते हैं, अभी एलिवेटर स्टक है तो शायद प्लेन ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही है, ऐसे जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, प्लेन को उल्टा कर दिया, तो एलिवेटर उल्टा फील दे दिया उनको और नीचे लेके चला गया। बट दिस इज नॉट समथिंग पायलट्स आर ट्रेन टू डू और दे शुड डू, दिस इज रॉन्ग। एंड ही, in the movie you will see that later on he accepted his mistake and he was jailed for it also, so some people died, but he saved the rest of the people because of elevator stuck यार, कम ऑन। अनेबल आरवीएसएम आपने बोला, मुझे अच्छा लगा। डिसेंड आपने मांगा 27, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 4A देखो, आप कहाँ हो, आप पोर्ट ब्लेयर के इनबाउंड हो 15 नॉटिकल माइल्स। आप का फ्लाइट लेवल हार्डली कुछ होगा, फ्लाइट लेवल 7050 समझो, फेज में हो आप, इतना हाई नहीं हो। तो आप फ्लाइट लेवल 2980 पे अभी नहीं हो, इतना कॉमन सेंस लगाना है आपको, आप पोर्ट ब्लेयर के विसिनिटी में हो, आपने डिसेंड कर लिया है, आपको मिल गया है डिसेंड। फ्लाइट लेवल 150 बोल दो, फ्लाइट लेवल 100 बोल दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एलिवेटर स्टक अब हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्रैश हो गए हो, मतलब सब खराब हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिसेंड विसेंड आरवीएसएम का कॉल है ही नहीं है।
मेडे मेडे मेडे, फोर्स लैंडिंग स्ट्रेट अहेड। ये दो ही चीजें चेंज करनी है, बाकी पूरा पोजीशन रिपोर्ट एलिमेंट ही होता है। इतना इजी होता है आरटी, समझ रहे हो? क्रैश का मुझे ठीक लगा कॉल, बट क्रैश का कॉल, स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हेन यू डू क्रैश, यू डोंट कॉल टावर, you call all stations on 121.5. Civil aviation VHF emergency frequency. Mayday, crash हुआ तो all stations on 121.5, Victor Tango Romeo Alpha November, crashed in vicinity of Port Blair, position not recognized at about 50 nautical miles, northeast, southeast, southwest, whatever comes to your mind. All passengers and crew on board safe. Aircraft suffered structural damage. Request immediate search and rescue, firefighting and medical services. सिंपल कॉल है, इसमें 10 on 10 आना चाहिए। बाद में आप टावर को भी बोल सकते हो, किसको भी बोल सकते हो, पहले इनको बोलना है आपको, सर्च एंड रेस्क्यू, कि वो आ सके फटाफट। 24/7 ये फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर होती है, उनका काम है, जैसे फायर ब्रिगेड का काम होता है, एम्बुलेंस का काम होता है, वैसे तुरंत आ जाएंगे आपके पास। फिर आप एटीसी को बोलो। एटीसी एनीवे आपको ट्रांसपॉन्डर पे स्कैन कर ही रहा होगा, पता होगा उनको कहाँ पे हो आप। आपका काम यही होता है हमेशा, और फिर आप इवैक्यूएशन करवा के सबको सेफ जगह ले जाते रहोगे, दो चीजें चलती रहेगी। लकी इसमें आपको ये अजम्पशन करना है कि क्रैश हो गया, बट मेरा आरटी इक्विपमेंट चल रहा है, कि मैंने कॉल ले लिया, समझ रहे हो? इट्स नॉट दैट क्रैश दैट वी सी इन वीडियोस, इट्स अ क्रैश वेयर एवरीवन इज सेफ, लकीली। इससे बुरा इससे बुरा सिमुलेशन नहीं कराएंगे आपको आरटी एग्जाम में। क्रैश विद सर्वाइव, ऑल सर्वाइव। यहाँ आप एकदम ब्लैंक हो गई, क्या हो गया नहीं पता। एब्रीवेशंस का पूरा बुकलेट दिया है, सब कुछ दिया है, आरटी में एब्रीवेशंस को डिकोड ही तो करना है, गिव अप कर दिया आपने तो यहाँ पे। मैं कंफ्यूज हो गई कि मतलब करना क्या है, एब्रीविएशन कंफ्यूजन और फुल सबको फॉर्म हो गई बताने। है। वो तो बताना है ना, फुल फॉर्म बताया क्यों नहीं यस। आपने? वही गुलशन वाली चीज हो रही है, सब मैं कंफ्यूज, दो चीज में हो रहा हूँ तो मैं कुछ और ही करके आऊंगा। दो चीज में हो रहे हो तो दो में से एक करेक्ट है, वो करो ना। फिर मैंने आपको बताया करो बच्चा, आपको आता नहीं आता, आपने बोला सर ठीक है, हाँ मेरे को समझ में, मेरे को आता है, चलो अच्छा है, आपको आता है करो। वीएचएफ क्यों बोल रहे हो, पूरा बोलो ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। स्टूडेंट्स, हर एब्रिविएशन, हर सिस्टम का आप लोग प्लीज फुल फॉर्म अच्छे से करके जाओ। रेंज भी रेंज है कि रेंज एंड डिटेक्शन है, चेक कर लो, ठीक है? आईएलएस ठीक है, एडीएफ ठीक है, लोकलाइजर एंड ग्लाइड स्लो था वो, आपको क्लिक ही नहीं हुआ वो। लोकलाइजर का LLZ था, तो मैं मतलब ये वही भी जाता है, वो कंफ्यूजन। भी जाता है, दोनों जाता है। कई जगह पर ऐसा होगा, कई जगह पर वैसा होगा। हिंट तो आ जानी चाहिए थी ना, और क्या ही होगा, कोई स्पेनिश रेस्टोरेंट तो नहीं होगा ना। सोचो ना, नियरेस्ट क्या है, तुम भी, तुम्हारे मुंह में आ भी रहा था, लोकेशन लोकलाइज्ड आ भी रहा था। क्लोजेस्ट क्या है, नो, कनेक्टेड विद व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, है ना? खुद को खुद डाउट नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप खुद के एग्जामिनर नहीं बन सकते हो। आप लोग खुद ही खुद को जज करते हो, रानी ये सबके साथ होता है, आप अवॉइड करो। खुद को क्यों जज कर रहे हैं हम लोग, मैंने जो क्या गलत किया, मैंने जो क्या गलत किया, नहीं मैंने गलत किया, मैंने, आपका काम नहीं है। आप प्रिटेंड करो अगर आपको नहीं आते कि आपने सही किया। एंड वो टैग तो चलो ठीक है, आज देख लेना आप क्या है, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 दूंगा मैं, 2 on 4, यहाँ पे 4 on 4, यहाँ पे 4 on 4, यहाँ पे No on 4, एंड यहाँ पे आधा आपने दिया है, आई वॉन्ट टू गिव यू हाफ मार्क्स। देखो कम से कम 12 तो मिल गए यहाँ पे एक्स्ट्रा, जहाँ 0 आते हैं। एग्जामिनर ने हिंट दिया तो आपने बोला मेरे को आता है, वो खुद से आ जाना चाहिए था, 12 तो खुद से कमा लेते यहाँ पे आप। आता तो था ही, आंसर तो दिए ही इतने अच्छे खासे सारे, तब क्लिक नहीं हुआ बस, है ना? पुश करो खुद को बस, हम कोई बेचारे नहीं है स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग इट एंड वी आर द बेस्ट। डोंट थिंक दैट वी आर लेसर देन एनीवन एल्स। बोलो कैसा फील हो रहा है अभी, टॉक। इस पे मैं आपको दूंगा 6 मार्क, ठीक लगा, बाकी में कोई एक और मार्क्स देख लेते हैं। रानी टॉक टू मी।
आई थिंक फेल ही हो जाऊंगी। क्या आई थिंक फेल हो गई हूँ मैं। फेल आई किसका? थिंक अरे बाबा, परफॉर्मेंस बिकॉज की बात करो, रिजल्ट पे मत फोकस करो रानी। टॉक अबाउट द कॉल्स, टॉक अबाउट द फीडबैक एंड टॉक अबाउट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। पास फेल के बारे में नहीं सोचना है। सीधा मैं फेल हो जा, कौन बोलता है ऐसे? क्या होता है पास फेल? वो मेरा काम है। तुम मुझे बताओ, फीडबैक के बारे में बताओ, टेक्निक के बारे में बताओ, कहाँ कंफ्यूजन है उसके बारे में बताओ, कैसे इसको करेक्ट करोगी उसके बारे में बताओ। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, फोकस ऑन व्हाट यू आर लर्निंग टुडे इन दिस सेशन। यस स्टार्टिंग में मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर है वो ठीक से नहीं पढ़ा मैंने, इसलिए हुआ। पर स्टार्टिंग में आपने बताया था कि पहले प्रॉपर रीड करो फिर माइंड में फ्रेम करो, और इतने सारे मतलब मिस्टेक्स किए हैं, बट वो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है और ज्यादा प्रेशराइज नहीं है, नर्वस नहीं हो, तो मैं कर सकती हूँ इजीली सॉल्व। बट नर्वसनेस की वजह से समझ में नहीं आता कि मतलब मैं अभी कर क्या रही हूँ, नेक्स्ट करना क्या है। अब बोलो, ये फेल है या पास है? पासिंग कितना है? पासिंग इज 50। खुद से डिसाइड कर लिया मैं फेल होंगी क्या? 56 आ रहे हैं, अब बोलो मैं फेल होंगी। ऑल इतने मिस्टेक्स है फिर भी आपने 6 मार्क्स दिए हैं। हाँ, अभी आप लोग ऐसे बात करना शुरू कर दो सब लोग। नहीं सर। नहीं नहीं, मेरे को क्या मिलेगा आप लोग से अच्छा अच्छा बात करके भाई? यू हैव अर्नड इट बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स इन योर कॉल, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैं शुरुआत में बोला है, अपनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रही हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई। सिली मिस्टेक्स करके भी तुम बेस 50 स्कोर कर रही हो। सिली मिस्टेक्स हटा दो, सीधा 80 स्कोर करोगे मिनिमम। तो नहीं इस नहीं पे सर, आप अच्छे हो, आपने मार्क्स दे दिए, एग्जामिनर नहीं देंगे। अब ये क्या जिद है, इनको समझ में नहीं आ रही है, समझाओ जल्दी। यू हेल्प मी अलॉट, सो अगर आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है तो कोई एग्जामिनर क्यों नहीं हेल्प करेगा? ये भी आप लोग को सिखाया है ना, अगर आपके बेसिक सही है तो एग्जामिनर्स हेल्प करेंगे। तो एग्जामिनर को क्रेडिट क्यों दे रही हो? क्या आपने मेरे को अंडर द टेबल कुछ दिया है क्या? तो फिर आई हैव टू स्टडी मोर सर एंड प्रैक्टिस। स्टडी हो गया है, मुझे ये बताओ फीडबैक समझ आया कि नहीं? यस कॉल्स में क्या मिस्टेक्स हुई समझ आया? यस, अभी कैसा फील हो रहा है? रिलीफ फील हो रहा है सर, क्योंकि कल से मैं स्ट्रेस में थी। मतलब कल थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि चलो कल मॉक होगा, मैं ये करूंगी वो करूंगी पूरा, मतलब कल पढ़ा, आज सुबह भी पढ़ रही थी। फिर जब कॉल देना होता है तब ऐसा हो गया, तो थोड़ा अब क्या करेंगे वो बताओ। सॉल्यूशन यही है कि और प्रैक्टिस करूँ मैं। सोल्यूशन तो बहुत सारी है हमारे पास। एरर हमने देखे हैं, रॉन्ग कॉल साइंस, रॉन्ग डिपार्चर, not doing weather deviation, not doing proper RCF deviation on your own, not using pan, not reminding that high power run up is on dumbbell, taxi to dumbbell. Last question, you were in the vicinity of Port Blair, RVSM नहीं था वहाँ पे। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपका एलिवेटर हुआ वहाँ पे मेडे। टेक्निकल पॉइंट्स सारे याद रखो बस। कॉल परफेक्ट होंगे, आप आराम से 80 ले आओगे। टेक्निकल पॉइंट्स पे ही बस आपके कॉल पे मिस्टेक है, बाकी आपकी आरटी अच्छी है। आरटी में आपकी 2 मिस्टेक्स हुई हैं, आपने बस कॉल साइंस अपने एंड में अच्छे से नहीं बोले हैं 2-3 बार, वो बिगिनर्स मिस्टेक होती है, हम बोल सकते हैं। उसके अलावा मुझे आरटी में ज़्यादा कोई मिस्टेक्स दिखे नहीं आपके। एक जगह पे करेक्शन सही नहीं बोला, डिसरिगार्ड हाफ करेक्ट बोला, उस पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो बाकी आरटी स्किल्स आपकी अच्छी है। कॉल स्ट्रक्चरिंग में, टेक्निकली कॉल में क्या बोलना है, जो इंटेंट है वहां पे आप मैसअप कर रहे हो। तो आई थिंक आपने सारे कॉल्स को शायद मगअप करने की कोशिश की होगी,
या मगअप के बेसिस पे आप मेमोरी को रिकलेक्ट करने पे डिपेंड कर रहे हो। मगअप के जगह पे आप लॉजिकली सोचो, मेरे 4 एलिमेंट्स, इंटेंट एंड हाउ डू आई स्ट्रक्चर एंड हाउ डू आई अंडरस्टैंड, सिचुएशन समझ लो, अपने आप आपका कॉल बन जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा एरर नहीं दिख रहा है मुझे आज। हर कॉल का परफेक्ट कॉल आप स्टडी कर लो और मुझे दे दो तो आप आराम से 80-85 ले आओगे। समझ रहे हो आप? ओवरऑल इट्स अ गुड परफॉर्मेंस फॉर अ फर्स्ट मॉक। योर नेक्स्ट मॉक विल टेल अस वेयर यू स्टैंड। तब तक मैं और कोई जजमेंट दूंगा ही नहीं। आप जो कर रहे हो करो फीडबैक के बेसिस पे, डोंट बीट योरसेल्फ अप। समझो ये एग्जाम ट्रिकी है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ को नहीं लगता है। हमें हमारे पे फोकस करना है बस, हम कितना अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहाँ रह गए नहीं रह गए हैं, बस। ठीक है, Yes, sir. मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आपका नहीं पता, बट आई एम श्योर नेक्स्ट मॉक के बाद आपको और अच्छा लगेगा। आप लोग को कल का भी मैं सेम टाइम रखना चाह रहा हूँ आरटी के लिए स्टूडेंट्स, 10 AM। कल मुस्कान का कॉल लेंगे, तो रानी आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा प्रिपेयर होने को। आज करना, कल लाइव अटेंड करना, मॉक देखना, प्रिपेयर होना, फिर आपका मुस्कान के बाद तुरंत आपका मॉक लूंगा, या तो कल या तो परसों, डिपेंड करता है, बट उसके बाद आपका मॉक होगा। सो मुस्कान, यू बी रेडी फॉर टुमारो फॉर अ मॉक, ओके? एंड एनीबडी हु नीड्स अ मास्टर की फॉर दिस अ सोल्यूशन, मैं आज नहीं दूंगा। आई वॉन्ट रानी टू ट्राई टू गिव मी परफेक्ट कॉल्स ऑन द सेम। सो रानी, आपका एक टास्क होगा कि आप अच्छे से री प्रिपेयर कर लो सब कुछ बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन पेपर, एंड फिर दिमाग से हर एक क्वेश्चन का परफेक्ट कॉल बना के मुझे भेजना। डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि आपने ये कॉल्स खुद से रिविजन के बाद खुद से परफेक्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, 1-1 कॉल ईच। तो वहाँ आपको भी क्या थी मिस्टेक और क्या सही था वो कंपैरिजन मिल जाएगा। नया कॉल परफेक्ट कर रहे हो तो हमें बहुत मजा आएगा फिर। तो ये इतना एक्सरसाइज है अदर देन रिविजन जो आप करोगे वो। Yes. ठीक है मुस्कान, व्हाट्स ऑन योर माइंड? Sir, in question number 5 delta, वो GS तक वो glide slope होगा क्या? यस, How, sir? लोकलाइज, Base लोकलाइजर पे, ग्लाइड स्लोप। sir base पे ऐसे तो फिर specific weight है abbreviations में। यहाँ पे वो लोकलाइजर ग्लाइसोप ही होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? इट्स नॉट ग्राउंड स्पीड, इट्स नथिंग एल्स। बाकी जो है देखो एब्रिवेशन बुकलेट में जो है मेन वही है। ऐसा कुछ आ गया तो लोकलाइजर ग्लाइड स्लोप साथ में रहेगा, अलग मत कर देना उसका आप लोग। Affirm. गुलशन, Sir, high power run up question number first alpha will do with passengers or without passengers? कैन बी डन विद पैसेंजर्स ऑफ कोर्स। ये डिपार्चर के पहले वाला है, विद पैसेंजर्स ही होगा ये। Affirm, sir. हाई पावर Victor Tango Golf सक्सेसफुल है 7. तो प्लेन वहां से ही टैक्सी करके रनवे करके उड़ लेगी, वापस नहीं आएगी। Sir, and question number second, when we have RCF, so it will be pan and all stations, and then your weather deviation procedure, and at last all exterior lights are on. Keep a lookout. Right. वही बताया था अभी, वही बताया था, करेक्ट। Affirm, sir. कॉल जाएगा ऑल स्टेशंस इन द विसिनिटी बिकॉज यू आर डेविएटिंग ऑन योर ओन एंड इट्स अ पैन कॉल। नुकुल, Sir, in question 3, the question is that communication are back to normal. So there is a communication failure. That's why in question number 2, we assume that there is a communication इट्स अ failure, ट्रिक right? पेपर, या इट्स अ ट्रिक पेपर। यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था कम्युनिकेशन बैक टू नॉर्मल। कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे भी रानी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो रियलाइज्ड आरसीएफ है। इवेंचुअली वो कैसे ना कैसे एग्जामिनर हिंट दे ही देता आरसीएफ है, बट So, but यस आपको sir, पहले पहले नॉर्मल कॉल ही लेना है, कंट्रोल को ही पूछना है डेविएशन। कंट्रोल नो रिस्पॉन्स देगा तो आपको आरसीएफ एज्यूम करना है, आप डायरेक्ट आरसीएफ एज्यूम नहीं करोगे। okay, sir. समझ रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे। तो यहाँ Affirm, हम sir. बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जरा सा
एरर है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, बट एग्जामिनर डिडंट केयर अबाउट इट, ऐसा है, मॉडरेटर डिडंट केयर अबाउट इट, ऐसा है। सो अपना जॉब बन जाता है कि समझे अच्छे से उसको। फिर श्रीधर, व्हाट्स ऑन योर माइंड? Sir, what is idle power run-up and where do we carry out idle power run-up? श्रीधर, ये सब पढ़ा चुके हैं, पता नहीं आपको याद क्यों नहीं है। आइडल पावर रनअप इंजन आइडल सेटिंग पे होता है। आइडल सेटिंग इज 20% और बिलो द इंजन थ्रस्ट कैपेसिटी। वो कहीं भी कर सकते हैं, पार्किंग बे पे भी कर सकते हैं, और डीटीसी अप्रूवल के साथ होता है। एंड उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपके आसपास कोई पर्सनल या कोई इक्विपमेंट होना नहीं चाहिए। ऑल योर एंटी कॉलिजन एंड एक्सटीरियर लाइट शुड बी ऑन, एंड ड्यूरेशन बताना चाहिए 5-10 मिनट्स, जो भी है। ईच इंजन 5-5 मिनट्स और ईच इंजन 110 मिनट्स। दैट यू कैन डू ऑन द पार्किंग बे। सिंगल इंजन आइडल भी होता है, डबल इंजन आइडल भी होता है। हाई पावर रनअप जनरली डबल इंजन होता है, जो पार्किंग बे पे नहीं कर सकते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा वहां पे। पीपल विल डाई। तो हमें ऐसी जगह जाना है, या तो हम रनवे पे उल्टा खड़ा हो सकते हैं, या डंबल एरिया। ये सब पढ़ाया हुआ है, नहीं पता तो रिवाइज करो स्टूडेंट्स। बट आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है शॉर्ट में। यू कैन जस्ट रीप्ले दिस पार्ट वाया यूट्यूब टू राइट इट डाउन एट अ स्लो पेस। आया बात समझ में श्रीधर? Affirm, sir. Victor Tango Sierra Mike, sir. गुरप्रीत, क्या है दिमाग में? सर व्हाट इज TB6 25 minutes in the top, sir, top left corner, TB6, TBA6. वो क्वेश्चन पेपर रेफरेंस है। पहले बाय आई यूज टू ट्रेन बाय द नेम द बेटर एविएटर। So I was planning to have a series of booklets and sessions called the Better Aviator series. तो TBA वहाँ से आया है। ठीक है जी। But afterwards I had changed it to, I didn't like the name anymore because I didn't want comparison that we are better than anyone else. Although booklet series planned the Better Aviator करके, so that you know we study in a better way, because textbook जितनी भी है कहीं ना कहीं हमें complicated ही लगती है। So that way, तो वो है और कुछ नहीं है। और सर ATD 1500, भाई साहब मार खाओगे अगर ये नहीं पता अभी तक तो आपको। सर एस्टिमेट एक्चुअल टाइम टाइम ऑफ डिपार्चर, ये डिले था आपके हाई पावर रनअप एंड इंजन फायर के वजह से। एक्सटिंग्विश किया, चेक किया, सब ठीक है नहीं है, 1 घंटा लग गया वहां पे। एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर डिले चल रहा है। ये सब कॉल में आना था, बट वो सब कॉल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए, इसलिए आया नहीं है सब। Okay. And sir, in the 4 question, the call would be made a दोनों elevator कॉल struck. मेड है, दोनों कॉल मेड है, प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसिस एंड क्रैश्ड। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसे डरना नहीं, मार खाओगे। तुम्हें पता है तो आंसर दो सर, ये एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर ही है कि कुछ और है। ऐसे डरा दोगे आप मुझे। ओके सर। गुस्सा तो आ ही रहा है तुम पे थोड़ा बहुत, बट बुरा मत मानो, प्रेशर नो डालो नो तुम पे सर, कि इट्स पढ़ाई ओके हो सर, जाए। इट्स ओके सर। गुस्सा आ रहा है कि लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हो, 10 दिन में 5 दिन में एग्जाम है, इसलिए बस। बाकी तो कुछ, यू आर नाइस स्टूडेंट, आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट। मजबूरी होगी इसलिए नहीं कर रहे हो, आई सर अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ कल परसों से। तो 2 दिन अभी फ्री होने से मिल जाएगा इतना बड़ा। देखोगे 2-2 3 दिन 4-4 6-6 महीने से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्या समझ के रखा है? सर आई ट्राई माई बेस्ट। हम फील तो करते हैं, परफॉर्म। ये सब खर्चा करना, आना जाना, ये सब, फिर ये सब सर को फीस में यस दे सर, दो ना, यस सर, अकेडमी को वेट काम कर आएगा ना ये सर। सब पैसा। यस सर, ये बड़ा। वेस्ट होता है ना ये सब पैसा भी। जी सर, पर सर चांस भी तो मिस नहीं कर सकते ना, एक बार देखना है एग्जाम कैसा होता है, क्या करना है। देखना है, घूमने हैं, मुंबई घूम के आते हैं। फिर मुंबई भी घूम लेना पूरी, फिर अच्छे से। मेक द मोस्ट ऑफ द मनी यू आर इन्वेस्टिंग। सर जोक्स अपार्ट, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। चलो, वैसे ट्राई करूंगा, बेस्ट ट्राई करूंगा, जो भी इन 4-5 दिन में जैसा भी हो सकता है, पूरी कोशिश करूंगा अपना। बस अच्छे बन के चलो स्टूडेंट्स, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलना ही है। एटलीस्ट डू द राइट थिंग, आज के ज़माने में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एनीवे चलो स्टूडेंट्स, गॉट अ गो। टुमारो आई विल मीट यू एट 10। और कुछ क्वेश्चन से डाउट से पूछो। जनरली अगर शुरू में आप मेरा जो आपको कल बोला था वो करते ना, तो हमारा 20-25-30-40 मिनट वेस्ट नहीं होता। तो उसमें मैं आप सबसे फीडबैक लेके, आप सबसे मार्क्स लेके पूछता, रानी को भी पता चलता लोगों को क्या फील होता है। आप लोग भी बोलते सर मुझे ये कॉल लेना था, ऐसा वैसा। बट टुडे वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज यू ऑल नॉट डूइंग व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल टू डू। तो प्लीज कल ऐसा मत करना, ओके?
10 बजे आके बैठ जाना, सेशन चालू भी है, अगर कॉल्स लेने बोला जाएगा, नहीं तो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द एग्जामिनर टू कॉल आउट योर नेम। गुलशन क्या है दिमाग में? लास्ट क्वेश्चन जल्दी पूछो। Sir, how will we know HF on board or not in question paper? अदर इंफॉर्मेशन। Okay, उस पे अगर लिखा रहेगा HF on board तो we will think like अगर लिखा होगा HF नॉट ऑन बोर्ड या ओनली VHF ऑन बोर्ड तो ही उसका मतलब है कि HF नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं लिखा मतलब HF भी है VHF भी है। okay sir, अभी क्लियर हो ये कितने बार बोली ये सब चीजें, अब भी क्लियर हुआ है? करते क्या हो फिर आप लोग एग्जाम में? कितनी चीजें आप लोग पूछ रहे हो जो मैं 10-10 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नॉट दैट आई माइंड रिपीटिंग, बट फिर ऐसी कितनी चीजें होंगी जो आपको और नहीं याद है, मैं वो सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ यार दोबारा से पढ़ाऊँ क्या सब कुछ सबको, ऐसा थॉट आता है पता। फिर तो थोड़ा मेहनत करो बच्चे लोग, एंड जो भी नहीं आता पूछ लो। आई वोंट क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम, क्रिटिसिज्म नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ बस। तो ऐसा डाउट पूछने से डरना नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे डाउट पूछते हो तो आप तो बस हमारे मजाक उड़ाते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओवरऑल वेरी हैप्पी विद द वे वी हैव डन टुडे। रानी वेल डन। 56 लाना इतने मेजर एरर करके भी, आई हैट्स ऑफ। ट्रस्ट मी, इतने एरर करके 40 से ऊपर नहीं आते हैं किसी को। आप कैसे ले आए 56, मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपने आरटी के कुछ बेसिक्स फॉलो किए हैं, जहां पे आपको मार्क्स मिल गए हैं एक्स्ट्रा। सो बैंक अपॉन दैट। बाकी एरर सिर्फ टेक्निकल एरर है, मतलब टेक्निकल एरर मतलब प्रोसेस गलत है बस, प्रोसीजर गलत नहीं है आपके विद टर्म्स टू आरटी। तो आप तो बहुत क्लोज हो पास होने के, आपको बस बैठ के सब स्ट्रक्चर अच्छे से बना के समझ लेने हैं बस। उसमें ज्यादा टाइम जाएगा भी नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रटने की आदत छोड़ दो, पॉइंटर्स की आदत बनाओ, पॉइंटर्स को रटो, काम आसान हो जाएगा आपका, एंड दैट इज द बेस्ट वे। ऑल जीनियसेस वर्क लाइक दैट। अदर वे टू वर्क इज टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ समथिंग दैट यू हैव रिटन एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। हाँ, मैंने खींच लिया, मेरे को याद आएगा, एग्जाम में कुछ आता है सीधा वो पिक्चर याद करो, सारा टेक्स्ट दिख जाएगा आपको। Try and practice and play with your mind and book, students, instead of your phone and social media and games, है ना? रिजल्ट्स के बाद छुट्टी मनाएंगे तब कर लेना ये सब आप लोग। चलो, टेकिंग योर लीव एंड थैंक यू। आई सी यू 10 AM टुमारो स्टूडेंट्स। मुस्कान, टुमारो ऑल द बेस्ट। क्या होता है कैसे होता है देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही आपके एक्चुअल, टेंशन नहीं लेना आप। रानी, बी ऑन द लुकआउट फॉर अनदर मॉक एनी टाइम आफ्टर मुस्कान मॉक ऑनवर्ड्स। Everyone else, if you need anything, just drop me a message. हमारे conversations कुछ pending है. Probably today I'll be talking to you all. If not, then definitely tomorrow I will speak to you. Hang in there. Hang in नहीं कर पा रहे हो, कुछ बहुत सीरियस है तो पैन लिख के भेज दो, मिल जाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एवरीवन। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.